good evening and welcome to this Power Pack class. Good evening everyone, welcome to your very own 6 to 8 channel, and as you can see, we have come with something very interesting and exciting for all of you. Yes, hey everyone, good evening, namaste. अरे मेंटी नहीं है यार आज. मेंटी कर लेंगे पहले. This is the first session, so today we'll check कौन कितने पानी में है ना. If you guys need a lot of writing explanation, अगर लगेगा तो फिर PPT is good. नहीं लगेगा तो next time से मेंटी is good. ठीक है? Yes. आज टेस्टिंग है. ठीक है? Today is the first session I would say of proper NSO. This is the we have a book over here. I don't know you can see it properly or not. है ना, ग्रीन है तो बहुत सारी चीजें हट जा रही हैं. So this is the Science Olympiad Set B 2021-22 paper. All right. Yes. अरे बिल्कुल. Birthday wishes of all of you have been conveyed to Ankita ma'am, and yes, someone I think Gungun was saying, yeah. We had a party today. We had a celebration today. Party तो we'll take from Ankita ma'am later. Yes. So Kriti ma'am, how excited are we for today's class and how are we going to go about it? I think this is a very different level exposure. मतलब हम लोग normal studies तो कर ही रहे हैं. We are going through this NCERT book and normal questions, but this is going to be something very, very, I think, out of the box where you will be checked on your deep understanding. मतलब ऐसे shallow knowledge नहीं चलेगी आज की class में. You have to put proper reasoning, you have to put proper thought before answering all the questions. Yes. Yes. And Kriti ma'am did not come flying in this gap, but it is all the magic of technology. Yeah. So people, देखो, sorry for the session delayed. The reason was there were some things needed to set up, or whenever you see us and Kriti ma'am together, मतलब समझ लो इसमें काफी मेहनत लगी है, right? So Pratha, that's the answer to your question. It's okay, है ना? I think you got the answer why is the session delayed. All right, people, ठीक है. Even if it is delayed, you won't regret coming to this session because today is a time for Olympiads and we all love to just go out of our way, है ना? हमारा मन तो करता है ये सब का, that boards and exams and schools, all these exams are fine, but Olympiad is something I want to give Olympiad यार एक बार अच्छे से. So this is something which is our goal, right? Yes. मैं कब पार्टी दूंगा? किस बात की? For your birthday. Mike, let it come. I'll see how many wishes I get. अंकिता मैम ज्यादा मिलेगी तब मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा. And anyway, everybody, you know that the first round of Olympiads are happening on October 18th, right? So those of you who are writing on October 18th, all the very best for you guys. And I think without wasting any more time, Saurabh sir, Kriti ma'am, I think we can get started, right? Yes, people. ठीक है. First of all, जितने भी लोग हैं, अभी कितने लोग हैं? I think 80 people are there. थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार. ऐसे ओलंपियाड वगैरह सेशन में क्या है ना, मेहनत लगता है बहुत ज्यादा. थोड़ा टीम बेचारी अलग से बैठती है, देख चेक करती है ना. थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ. थोड़ा बताओ क्या चल रहा है, कितने एक्साइटेड हो आज क्वेश्चंस करने के लिए. They are like in the chat की different studios में, but it seems बिल्कुल साथ में है. So I think this is something amazing जब होता है, जब we we have multi studio sessions. Yes. Somebody is flying and coming on screen. Yeah, Teju, I know. Very good, people. Come on. Show excitement, yaar. Flood कर दो emojis से. हाँ, बहुत अच्छे. Give us some nice emojis. Press the like button. And as you are saying, no, okay, it feels like magic. This magic is because of the great team who work over here, and you all know Jesima. He's here handling all these things for you. So please, guys, come on. Nice words, nice likes. If someone is new, make sure you subscribe. This is for the team, right? All their excitement, all their hard work. Almost 30K. And this session is going to bring out the best out of you also. Yes. They are saying excited है लेकिन express नहीं कर पा रहे. So cute. Nice. Very good. So, ma'am, 25K हो गए. Or it's not actually 25K. It's almost 29. Yeah, it's almost 30 now. I think इस सेशन में 30K हो जाना चाहिए. Yeah. इस सेशन में 30K हो जाना चाहिए. और अगला टारगेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज नो व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर यू. देखो 9-10 वालों से जलना वलना नहीं है. जल्दी से अपने को अपना प्ले बटन चाहिए अब, राइट? Oh, nice, Gungun. That is our target, long-term target. Short term is
30K. जो अभी कर देते हैं. Yeah. Pradna, by the end of this session, you will get to listen something. All of you do this every class. I think I'll take Hindi classes and you see soon. Yeah. बस show off करना है ना? Yeah. Yes. So people, thank you, and yes, we teachers are there obviously, but it's all because of you guys, है ना? You give us strength, you give us motivation. Sorry, not motivation. Motivation. I got a notification. I'm sorry. Yes. And of course, everybody, do not forget to register for ANTHE, right? As much as you want to be part of Olympiad, do not forget to register for ANTHE. And ma'am, ANTHE is super important, right? Dates are coming close by. Yes. I think all the more reason you should actually register for ANTHE because the last date is very near. It's just round the corner. Registration उससे भी पहले बंद हो जाएगा. And if you enjoy giving all these Olympiad exams, you would definitely love, attempting for ANTHE as well. Yes. Yes. Manisha, we can see your messages. Sorry. And Sorry, ma'am, I think we can also tell you that, this Olympiad session will help you for ANTHE also because the level is kind of very much equivalent, है ना? Yeah. तो ANTHE के अंदर भी mental ability आता है, इसके अंदर भी आता है. And yes, don't worry guys, we'll take sessions on mental ability also. Today we'll take care of all the science part for you, है ना? So ma'am, कैसे किया जाए? Chemistry से start किया जाए? क्या बोलते हो आप? I think chemistry से start करते हैं. Right. Super excited to start with chemistry. फटाफट से, I think बढ़िया रहेगा. Aditi, आपकी आवाज बहुत है. Your statement is enough for us to understand you are excited, bas. Right. And everybody, so we'll be starting off with chemistry first, then we will do the physics questions, and in the end, we'll be doing the biology questions, okay? So after physics, you all don't give up and say, ho, I'm going. We stay there till we finish biology. Science है पूरा ये, ठीक है? ऐसा नहीं बोलना कि my favorite is bio, I'll come in the end. My favorite is chemistry, I'll stay in the start. See, in the exam, it's going to be science as a whole, right? So Yeah. you need to be there throughout. Nazarana, for Maths Olympiad, we'll do a session. Don't Yeah. worry. Hey, Ankita. नहीं, yeah, I remember you. Chalo, people. Let's start with chemistry questions, ma'am. आपको we पहले ready? magic से, I think, magic से disappear होने वाले. I appeared magically. You're going to disappear magically. Yeah. Alright. So, next section is the chemistry question section. Yes. So, it's time for us to disappear. Yes. And We'll see you soon. can you disappear on the cue? जैसे मैं ना? चलो ठीक है. और क्या? 3, 2, 1, tada. Hey, that was a nice one, isn't it? तो यार एक बार पहले बहुत सारी clapping हो जाए for the entire team who's actually creating this magic for all of you. जल्दी से फटाफट से. Loads and loads and loads of clapping emojis for the team यार. मजा आता है इसे देखकर. Yes. ए दीपिका, गुनगुन, गौतम, मानिका, हरसिमरन. Welcome all of you. यार हम start करेंगे chemistry से, but as ma'am said, as sir said, Science Olympiad है, तो सारे questions आपको पता होने जरूरी हैं. तभी तो you'll nail this Olympiad. So you have to stay till the end. बिल्कुल भूलना नहीं है वो चीज. Okay. अब chemistry में यार क्योंकि we are having all the questions at once, तो order आगे पीछे होगा, but we've put the question number for your reference. Your sound is a bit low. I can get some of the comments की sound थोड़ी सी धीरे है. If you can just fix it quickly. Yes, meanwhile, I want to see all of you super excited to begin with chemistry. So we have some good number of questions. पहले आपको अटेम्प्ट करने देते हैं. पहले आपकी नॉलेज चेक करते हैं. नहीं आएगा तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. डन? So sweet, all of you. So many of you writing, ma'am, we just love chemistry. Amazing. I think science as a whole बहुत ही magical subject है. Hey Gunjan, Trisha, Anshu, Pranjal, let's get started, guys. अच्छे questions हैं. Questions से घबराना नहीं है. Please understand this thing. Olympiad में थोड़े अच्छे questions ही होते हैं. तभी तो हम improve करेंगे. Yes, Aisha. All right. The first question is right there in front of you.
Why does the temperature of a liquid drop during evaporation? First of all, I hope आपको पता है कि evaporation के टाइम पे liquid का जो temperature है वो drop करता है. I hope you know this first. Yes. अब 4 options आपके पास है. Air takes away the thermal energy by conduction. Air takes away the thermal energy by radiation. Every liquid particle gains energy, enough energy to break free of the liquid state. या फिर the average energy drops due to escape of higher energy molecules into the air as vapor. ध्यान से सोचना. I know where you'll get confused. 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए. 2 ऑप्शंस ऐसे फटाफट रूल आउट कर दो कि तो अगर यहाँ पे कोई लाइफलाइन आपके पास होती तो 50-50 आप कर देते. Let's see. A lot of you saying ma'am option C. A lot of you saying ma'am option D. किसको लॉक करा जाए? किस ऑप्शन को हम लॉक कर दे? फटाफट से चैट में बताओ. तुम लोग रॉक स्टार्स हो. ध्यान से सोचो. You will arrive at the correct answer. B B B C C C D D D. A भी दिख गया. सब कुछ दिख गया यार. C पे बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम C होगा आंसर. नेक्स्ट मोस्ट कमेंटेड ऑप्शन इज डी, देन बी, देन ए. अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम सी है, बहुत बच्चे कह रहे हैं डी है, फिर इट्स बी एंड देन इट्स ए. चलो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या यहां पे आपको एक्चुअली क्या अप्रोच होनी चाहिए यार आपकी, हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चंस. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए में हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की. अब कंडक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट से. डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है. तो यार ये ऑप्शन तो रूल आउट हो ही गया, राइट. ऑप्शन बी में हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की. यार रेडिएशन में वी ऑल नो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. सो यहां पे नो मीडियम है. वी आर रूलिंग दिस आउट एज वेल. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सी और डी ऑप्शन में हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन की बीइंग अ सरफेस फिनोमेना. सरफेस फिनोमेना का मतलब मान लो ये आपके कुछ पार्टिकल्स हैं, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं आपके यार ये आपके सरफेस पे हैं, कुछ पार्टिकल्स नीचे हैं, कुछ पार्टिकल्स उससे भी नीचे हैं, राइट. ऐसे कोई रैंडम सरफेस बना दी मैंने. अब ध्यान से देखो, जो पार्टिकल्स आपके सरफेस के पास होते हैं ये वाले, द वंस विच आर एट द सरफेस, नाउ दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू हैव हायर काइनेटिक एनर्जी. इनमें क्या होगा यार, काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी, एंड दे आर एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स. तो नीचे क्या रह जाएगा यार, नीचे हमारे पास कैसे पार्टिकल्स रह जाएंगे, हमारे पास रह जाएंगे लो एनर्जी पार्टिकल्स. एंड क्योंकि ये लो एनर्जी पार्टिकल्स से टेम्परेचर विल ड्रॉप, राइट. सो बस यही आंसर था, दैट इज ऑप्शन डी. द एवरेज एनर्जी ड्रॉप्स ड्यू टू एस्केप ऑफ हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स इनटू द वेपर, इनटू द एयर एज वेपर. अब यार ऑप्शन सी क्यों नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने ये तो समझ लिया इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, जो पार्टिकल्स हमारे सरफेस पे है उनकी एनर्जी ज्यादा है, वो ब्रेक कर जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एंड वेपर में बन जाते हैं. पीछे क्या रह गया, पीछे लो एनर्जी पार्टिकल्स रह गए, इसलिए लिक्विड का टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है. सी ऑप्शन क्यों नहीं है, सी में ध्यान से देखो, इन्होंने लिखा है एवरी लिक्विड पार्टिकल गेन्स इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री. Every particle is not gaining the energy, only the particles which are at the surface, they have higher kinetic energy. So that is why this option is also out. I hope you've understood where you made a mistake, क्योंकि बहुत बच्चे C और D में confused थे. If you've understood कि yes ma'am अब कैसे approach करना है ऐसे question को समझ आ गया, फटाफट से एक thumbs up हो जाए. Mix है प्रार्थना, it's going to be mix, कोई particular chapter नहीं. आर्यन, काइनेटिक एनर्जी को आप स्पीड समझ लो, जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है ना पार्टिकल्स की, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. आई कैन सी लोड्स एंड लोड्स ऑफ थम्स अप. डन सबिया, प्रॉमिस. गुनगुन गॉट द आंसर रॉन्ग बट शी इज अंडरस्टूड. ऑसम. यस रुचि, बोल आएगा, डेफिनेटली आएगा, डोंट वरी. यस, वेरी गुड यश, आयशा, दीपिका.
यार ऐसे समझ लो कि जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, जो पार्टिकल सरफेस पे है उनकी एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर वो लूज हो जाएंगे तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कम है, तो कहीं ना कहीं देयर इज गोइंग टू बी अ टेम्परेचर ड्रॉप बिकॉज ऑफ दैट। बट एवरी पार्टिकल में नहीं है, इसलिए हमने ऑप्शन सी रूल आउट किया। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको टफ लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि यार ओलंपियाड के क्वेश्चंस है ना, तो नॉलेज ऐसे ही गेन होगी, धीरे धीरे गेन होगी। चलो क्वेश्चन नंबर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। अ फ्लास्क इज फिल्ड विद एयर एंड टाइटली स्टॉपर्ड, स्टॉपर्ड मतलब आप समझ लो सील कर दिया उसे, एंड देन दिस फ्लास्क इज प्लेस्ड इन मेल्टिंग आइस। एक फ्लास्क है आपका, ठीक है, एक फ्लास्क मान लो, उसमें आपने क्या रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है, ऊपर से आपने इट्स टाइटली स्टॉपर्ड एंड देन आपने उसको रख दिया यार आइस में, यू केप्ट दिस इन आइस। नाउ थिंक अबाउट दिस, साइज ऑफ फ्लास्क इज द सेम, बट जो प्रेशर ऑफ एयर है और जो स्पीड है वो क्या होगा। नो रोशनी, नॉट एट ऑल, बच्चा किसी को इग्नोर नहीं कर रहे, हर्षित मेंटी होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। हे शकुंतला थोड़ा रिफ्रेश करके देखो, मे बी यू विल बी एबल टू find it in a bit better manner. Thank you Deepika. Hey Shanvi. केशव, ओलंपियाड के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ध्यान से सोचो प्रेशर को क्या होगा। अगर इसको आइस में, मेल्टिंग आइस में इस फ्लास्क को रख दिया तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इन अ वे। इस बेसिस पे सोचो कि प्रेशर को क्या होगा, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स को क्या होगा। नो निशी, नॉट इग्नोरिंग एनीवन बच्चा। थैंक यू निवेदिता। फटाफट से इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। वेरी गुड आर्यन, आर्यन ने तो फटाफट से सही आंसर मार्क कर दिया यार चैट में। व्हाट अबाउट अदर्स, हर्षित वेल डन वेल डन। रमन आपको एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझाते हैं। एक फ्लास्क है, उसके अंदर कुछ एयर है, उसको हमने ऊपर से बंद कर दिया एंड अब इस फ्लास्क को हमने रख दिया मान लो किसी ऐसे कंटेनर में जिसमें आइस पड़ा है। अब जो प्रेशर होगा उस एयर का वो बढ़ेगा, सेम रहेगा, कम होगा, और जो स्पीड है उन मॉलिक्यूल्स की, उन पार्टिकल्स ऑफ एयर की, उसको क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू से, एंड दिस इज सुपर कूल यार। ऑल ऑफ यू को अराइव एट द करेक्ट आंसर। सब लोग बोल रहे हैं मैम ऑप्शन सी को लॉक कर दो, प्रेशर भी डिक्रीज होगा, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज होगा। वेरी गुड। सी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के है। अब यार अगर हम इसे आइस में रख रहे हैं, उस कंटेनर में मेल्टिंग आइस है, तो इन अ वे टेम्परेचर जो है हमारा डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एंड जो हमारी स्पीड होती है वो भी तो टेम्परेचर से लिंक्ड है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्पीड भी कम हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। इसको समझने के लिए ना उल्टा करके देखते हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लो इफ यू हीट अ गैस, व्हाट हैपेंस, द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग रैंडमली। रैंडमली पार्टिकल्स मूव करते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है ना। व्हेन वी हीट तो प्रेशर बढ़ जाता है, बट रिवर्स भी तो ट्रू हो गया। जब हम कूल कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो प्रेशर भी कम हो जाएगा एंड वो स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वो भी कम हो जाएगी। थैंक यू श्याम, वेरी गुड आयशा, आयशा गॉट द आंसर राइट। यस शकुंतला, तब रैपिडली मूव करते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। मनीषा, फॉर सच क्वेश्चंस आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है प्रेशर भी कम हो रहा है। बिल्कुल मैथ्स का भी करेंगे, डोंट वरी। ओ गुनगुन गॉट इट राइट नाउ। रोशनी इज लाइक बल्ले बल्ले, क्वेश्चन समझ आ गया। तनिष्क, आई एम रिपीटिंग दिस वन फॉर यू अगेन। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, थोड़े से ये ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे आपको यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट विद सच क्वेश्चंस, क्योंकि सारा सिलेबस आपने करा नहीं होता अभी। थोड़ा सा टाइम दो, आपको सब समझ आएगा, सब अब्सॉर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। यार ध्यान से सोचो, जब हम हीट करते हैं गैस को तो क्या होता है, जो एनर्जी है वो बढ़ रही है, पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बढ़ रही है,
रैंडमली वो मूव कर रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है इनसाइड दैट कंटेनर। हमसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, हमसे पूछा कि अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि हमने उसको कहाँ रख दिया, आइस में रख दिया, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, सो वी हैव मार्क दिस आंसर। एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स also going to decrease, so they'll slow down. Very good, Trisha. Yes, Vaishnavi. माने ANTHE questions नहीं, but they'll help you for ANTHE also. Nice. Yes, yes. Random, देखो random order में आ रहे क्योंकि बीच में physics and biology questions भी होंगे ना. Very good. Yes, Ajay. Answer was option C. चलो, let's move on to the next question, and I think this one all of you will get it right. And you have the poll also. You wanted poll ना, poll भी आ गया. Match the columns and select the correct option from the given codes. You've got anode, you've got cathode, you've got ions, you've got electrolyte. Now you have to figure out कि कैसे match करना है. Column 2 में what all do we have? We have positively or negatively charged. We have positive terminal, negative terminal, conducting solution. But बहुत बच्चे confuse हो जाते हैं इसमें anode cathode में, so you have to be very careful. What's going to be the correct answer? A lot of you are saying, let's see, we have a poll for this. A, B, सब बच्चे A और B में confuse हैं. Manisha, this is not from any chapter. This is from NSO exam, right? B for valle, acha. A. A lot of you are saying A. A lot of you are saying B. Final karo. Okay, I can see mostly people have voted for option B. यार, I want all of you to pay attention. ध्यान से देखेंगे यार ये वाला. ध्यान से देखेंगे. All right. देखो यार. This is a very, I would say, direct question. ये वाला difficult नहीं था. पहले दो questions I understand, थोड़ी understanding ज़्यादा चाहिए थी. इसको हम ध्यान से देखते हैं. पहले मुझे ये बताना, ये बैटरी है कि ये सेल है? मैंने क्या बनाया है? Is this a battery or is this a cell? फटाफट से. Not done this chapter. कोई बात नहीं. Yes, बैटरी ऑफ 2 cells, राइट? तो यार ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल हो गया. अब इन्हें यार हमने इलेक्ट्रोड से ज्वाइन करा हुआ है, तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया इलेक्ट्रोड का, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया. Why chemistry questions are like physics? कोई बात नहीं, पूरा साइंस एक जैसा ही होता है. Now this is being kept in a solution. ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखते हैं. ये हमारी बैटरी है. We have 2 electrodes here. The positive electrode is anode. हमारा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या है? हमारा एनोड है, थ्रू विच करंट फ्लोज इन. जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो क्या है? हमारा कैथोड है. यहां पे यार इलेक्ट्रोलाइट भी होता है. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हमारा कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है. सब्सटेंस दैट्स गिविंग आयंस इन वाटर ना, तो कंडक्ट कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, कंडक्टिंग सोल्यूशन है. एंड यहाँ पे हमारे आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं. तो आयंस क्या हुए? या तो पॉजिटिवली चार्ज हुए या फिर नेगेटिवली चार्ज हुए. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. क्यों ऑप्शन ए है? एनोड. एनोड क्या हुआ? हमारा पॉजिटिव टर्मिनल अभी देखा. कैथोड नेगेटिव टर्मिनल हुआ. आयंस या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंडक्टिंग सोल्यूशन हुआ. वेरी गुड. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू, द मोमेंट यू स्टार्टेड यू कुड फिगर आउट दैट द आंसर इज ए. इट्स ओके. सी, इफ यू हैव नॉट डन दिस चैप्टर, दैट इज ओके. प्रार्थना, नो, एनोड पॉजिटिव होता है आपका, अनायन नेगेटिव होता है. गाइज, आई नो वेयर यू गॉट कंफ्यूज. समझ आ गया. देखो,
अनायन की जब बात करते हैं वो नेगेटिव होता है, बट एनोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है. कटायन की जब बात करते हैं वो पॉजिटिव होता है, बट कैथोड आपका नेगेटिव, आई कैन नाउ यू कैन सी दिस, नेगेटिव टर्मिनल होता है. अब इसको याद कैसे रखेंगे? one small hint for you to remember all of this. अनायन का बता रही हूं कैसे याद रखेंगे. If you know the charge on anion, you can figure out all the rest of the charges. How to remember for anion? Please see. A negative ion. Anion is a negative ion. Anion पता चल गया तो you would know cation क्या है. You would know anode पे चार्ज क्या, you would know cathode पे चार्ज क्या है. Yes, I hope now you all will remember this. Anion is a negative ion. Yes? Oh, you were confused in the sign only. I could figure that out. Otherwise, ये question easy था. Very good, very good. फटाफट से एक बार चैट में बहुत सारे थम्स अप हो जाए. अगर अब कभी भी आगे क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि बताओ यार अनायन पे चार्ज क्या, यू विल रिमेंबर कि हाँ यार अ नेगेटिव आयन करके मैम ने याद कराया था कि अनायन पे तो नेगेटिव चार्ज है. अनायन नेगेटिव हो गया तो कटायन पॉजिटिव हो गया. अनायन नेगेटिव है तो एनोड ऑपोजिट साइन का पॉजिटिव हो गया. कटायन पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव हो गया. फटाफट से लोड्स एंड लोड्स ऑफ थम्स अप. प्रार्थना, एनोड बच्चा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, अनायन नेगेटिव होता है. Yes, Deepika, definitely. Very good, Anushka, Aisha, Anika, Kritu, Manya. Very good, well done. Awesome. Chalo, let's move on to the next question. This is question number 30 from that paper. I think this also you will be able to solve. You have the pole right there, okay? ध्यान से करेंगे अब. X is a thermoplastic. Okay. X, that's a thermoplastic. Okay. And it's used to make soles of shoes. While Y, जो हमारा Y है, that is thermosetting plastic. That is used to make electrical switches. Okay, now you have to figure out X and Y क्या है. Simple one. Let's see if you can figure out. PVC and bakelite, polythene and PVC, melamine and bakelite, melamine and PVC. See, ये सारे आपको X given है. All these are X. Figure out इसमें से thermoplastic कौन सा है. Okay, these are all X. And these are all Y. You have to figure out thermosetting plastic कौन सा है. Come on, we've done this chapter in class, yaar. अच्छा, Y you are very sure is bakelite. Aisha is very sure Y तो bakelite है. Okay. What about X? All right, I can see most of you have voted for option A, जो बिल्कुल correct answer है. Well done, all of you. Very good. See, slowly we are able to tackle these questions also. Very good, awesome all of you. बहुत बढ़िया. तो यार जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये जो है ये आराम से डिफॉर्म हो जाते हैं. दे कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली. तभी तो यार सोल्स ऑफ शूज बनाने में काम आ रहे हैं. एक्चुअली में थर्मोप्लास्टिक रबर्स यूज करते हैं इसमें हम. ठीक है, बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं एक बार आपने इनको मोल्ड कर दिया दोबारा आप रीमोल्ड नहीं कर सकते. They cannot be remolded. इनको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते. तो यार बेकेलाइट जो है वो क्या है? पुअर कंडक्टर है, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी. तो अगर पुअर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के काम आ सकता है. सो बस वही से ही हमें आंसर मिल गया कि X जो थर्मोप्लास्टिक है जो हम यूज कर रहे हैं टू मेक सोल्स ऑफ शूज, दैट्स PVC. नेक्स्ट Y जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो इलेक्ट्रिकल स्विच में यूज हो रहा है, दैट्स बेकेलाइट. एंड आई नो हमारी बुक में बेकेलाइट का गिवन था, दैट्स हाउ यू कुड फिगर आउट कि Y तो पक्का बेकेलाइट ही है.
Oh, Roshni, tabhi. Roshni is in grade 7. First of all, Roshni, very good that you're trying to attempt a lot of grade 8 questions. Now I can figure out कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है. Yes, yes, Aisha. Very good, यश. चलो फटाफट से थम्स अप दे दो यार अगर अब समझ आ गया कि हमने करा क्या. हाँ चलो, लेट मी जस्ट गो बैक. हाँ, ये देखो यहाँ पे डेफिनेटली जो ये होता है ये इजीली बेंड भी हो सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक. करेक्ट. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. वेल डन. थैंक यू रुद्र. थैंक यू निवेदिता, श्रुति, सरिता, अक्षरा, यश, प्रियेश, अनिका. वेरी गुड. कृतु वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है यार. इसी एनर्जी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार कोई भी टफ क्वेश्चन का घबराना नहीं है प्लीज. ठीक है. वेरी गुड सृष्टि एंड अदिति. हे, दिमाग वाला अच्छा क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री में से. नाउ दिस क्वेश्चन सेज आपको एक सेटअप गिवन है, उसमें 3 बीकर्स है. लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. वी हैव 3 बीकर्स. एक चीज कॉमन है तीनों बीकर्स में कि सोल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ एक्स प्रेजेंट है पहले 2 में, एंड सोल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ वाई है इन द लास्ट वन. ठीक है. पहले में हमने आयरन की स्ट्रिप रखी है, सेकंड में जिंक, थर्ड में एक्स. Now they are saying if the reaction occurs in all the 3 beakers, मतलब तीनों में रिएक्शन हो रहा है. मतलब if I talk about the first case, iron plus the sulfate of X रिएक्शन हो रहा है, zinc plus the sulfate of X रिएक्शन हो रहा है, X plus the sulfate of Y रिएक्शन हो रहा है. That means in all the cases reaction is very much happening. You have to figure out कि X क्या है और Y क्या है. X क्या है और Y क्या है. यार एक बार ध्यान से सोचो. लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग एंड लेट्स जस्ट डू द स्टेप वाइज. एक बार ऑप्शंस देखते हुए करते हैं यार. फर्स्ट केस हमारा ये, इफ द रिएक्शन इज हैपनिंग, आयरन इज एबल टू रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट ऑफ X. दैट मींस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन X. डू यू अग्री? Do you agree with me? Have I written this right? You have to keep checking यार कि मैम सही बता रही है कि नहीं बता रही. अगर आयरन का रिएक्शन हो पा रहा है सल्फेट ऑफ एक्स से, तो मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, वो डिस्प्लेस कर पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है. यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गुड टू गो. अच्छा यहां पे देखो, इन द सेकेंड सेटअप जिंक इज ऑल्सो एबल टू रिएक्ट विथ सल्फेट ऑफ एक्स. मतलब जिंक की रिएक्टिविटी भी आपकी एक्स से ज्यादा है, तभी तो वो डिस्प्लेस कर पा रहा है. अगर वो कम रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ही नहीं पाता. वी हैव डन दिस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट? सो दिस इज आल्सो राइट. नाउ लुक एट द थर्ड वन. थर्ड वन सेज कि एक्स रिएक्ट करे सोल्यूशन ऑफ वाई से, और रिएक्शन यहां पर भी हो रहा है, व्हिच मींस द रिएक्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई. नाउ यू जस्ट हैव टू फिगर आउट व्हाट इज एक्स एंड वाई बेस्ड ऑन दिस. ट्राई सॉल्विंग विद दिस वन फर्स्ट. रिएक्शन जो आप सॉल्व कर रहे हो रिएक्टिविटी बेस्ड, ट्राई सॉल्विंग विद दिस वन फर्स्ट. ध्यान से देखो. Oh, a lot of you saying option B is the correct answer. चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं. मान लो तुम लोगों ने 50-50 ले लिया इस क्विज में, एंड देखते हैं कौन से 2 ऑप्शंस रूल आउट हो रहे हैं. Clearly, we can see over here. Please pay attention because this is तो यार ये वाला चैप्टर हमने करा भी है साथ में. X की जो रिएक्टिविटी है वो Y से ज्यादा है. तो क्या सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है? Yes or no? Quick, you have to rapidly answer in the chat. सिल्वर की रिएक्टिविटी क्या कॉपर से ज्यादा है कि नहीं? Yes or no? Gungun says no. Ruchi says no. Pratna says no. Guni Queen says no. Everybody is saying no. So this option is ruled out because X needs to be more reactive than Y. That means this option is out. Similarly, look at option B that you people chose. Is copper more reactive than magnesium? No. Copper is not more reactive, so this option is also ruled out because X has to be more reactive than Y.
तभी तो यहाँ रिएक्शन हो रहा है ना. तो यार ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो इस बेसिस पे हमारे रूल आउट हो गए, जस्ट बेस्ड ऑन दिस थर्ड कंडीशन. नाउ वी आर लेफ्ट विद एल्यूमिनियम एंड सिल्वर एंड वी आर लेफ्ट विद कॉपर एंड सिल्वर. तो यार सिल्वर जो है हमारा वो तो फॉर श्योर हमारा वाई है ही है. वी हैव टू फिगर आउट एक्स. अब प्लीज थिंक एंड करेक्ट योर आंसर इन द चैट राइट नाउ. Please think and correct your answer. I've told you how to go about this. Everybody saying, ma'am, it's D. Very good, very good. Now you are able to arrive at the correct answer. Iron needs to be more reactive than X. Zinc needs to be more reactive than X. Let me write it here. Iron needs to be more reactive than X. Zinc needs to be more reactive than X. तो aluminium तो X हो ही नहीं सकता because aluminium ज्यादा reactive है. So X cannot be aluminium, which means that this is also not the correct answer. Which brings us to the correct answer, that is option D. Very good, all of you. Awesome. Anika, Gungun, Pratna, cool. Rubik's, this was really cool actually. Sumita, Aisha, Yash. Oh, Yash is also from grade 7. अरे ग्रेड 7 के बच्चे वेरी गुड यार. तुम लोग ग्रेड 8 के ओलंपियाड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. वेरी गुड लर्निंग सेंटर. एडिट्स, लक्षित, यश, कृतु, अदिति, रोहित, बिल्कुल सही यार. तो यार हम ऐसा करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता देती हूँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है. एक ऑर्डर बता रही हूँ, उस ऑर्डर में हम याद रखेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे फिर. ये क्या लिख दिया मैम, ये तो ABCD ऑर्डर में भी नहीं है. हाउ डू वी रिमेम्बर दिस? अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. रैंडमली ये लेटर्स आ गए, करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे. मैं आपको पहले मेटल्स के नाम बता रही हूँ, बीच में हाइड्रोजन जरूर एक नॉन मेटल आएगा. मेटल्स के नाम बता रही हूँ, देन आई टेल यू इजी वे टू रिमेम्बर दैट. प्लीज ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, दिस वे यू विल नेवर फॉरगेट द रिएक्टिविटी सीरीज. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold, platinum. I have just written the initials of these metals. Now, how will you remember? I'm telling you one easy way to remember. Please, all of you pay attention now. कैसे याद रखेंगे? ध्यान से देखो. Please stop calling me a zebra in the lunch. Hey, call me something good, please. Please stop calling me a zebra in the lunch. Call me something good, please. बस ये याद रख लो, तुम्हें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी. Yes, पोटेशियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. वेरी गुड यश. यश को बहुत अच्छा लगा ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर याद करने का तरीका. वेरी गुड. थैंक यू अदिति. फुल्ली अंडरस्टूड. वेरी गुड. वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ओह, दिस वन यू मेमोराइज. नाइस. ए सिमी. ऑसम. हरसिमरन कुछ नहीं, बस मेटल्स के साथ साथ एक निमोनिक बना दिया है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा इन द लंच. कॉल मी समथिंग गुड, प्लीज. दैट्स इट. Yes, that's why sodium, potassium, they are kept in kerosene because they are so very reactive. बहुत ज्यादा reactive है वो. बिल्कुल. And इसके basis पे यार we could figure out that the correct answer was option D. If you've understood this question, एक बार फटाफट से I want all of you to give me your favorite emoji infinite times in the chat. Infinite times in the chat. Come on, quickly. बहुत सारे इमोजीज. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, कूल रूबिक्स. यस, कृतु. इंटरेस्टिंग, नाइस. सो गुड टू सी दैट. पावरफुल जिराफ. हाँ, कुछ भी. यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो. तुम लोग तो यार रॉक स्टार्स हो. ऑसम, ऑसम. हे सरिता. हे सुमिता, व्हाट हैपेंड? वाओ, ऑसम ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया यार. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार. क्वेश्चन कह रहा है
color of 4 solutions with different indicators are being given to you. Okay. Phenolphthalein, methyl orange, China rose, blue litmus, and PQRS भी आपको given है. You have to figure out कि PQRS इस order में क्या क्या है. PQRS, PQRS, PQRS. चलो, to make it simpler for you, ताकि ऑप्शंस देखने में आपको प्रॉब्लम ना आए, I've written this. Figure out what is PQRS quickly. Let's see how many of you will be able to mark the correct answer. A lot of you are saying option B या option D. गुनगुन says it's D, मैम. D पे पक्का, D को पक्का लॉक कर लिया जाए. Very good, very good. It is option D. चलो चलो देखते हैं. यार पहले इनके कलर चेंजेस हमें पता होने चाहिए. We should know about the color changes and then we should know the nature of the substances given to us. Right? अब हमें क्या क्या given है, पहले एक बार कलर चेंज हम डिस्कस करते हैं. क्यों ऑप्शन डी सही है अभी डिस्कस करते हैं. यस चलो यार हमारे पास, लेट मी से दैट, इसको मैं फर्स्ट इंडिकेटर बोल देती हूं, सेकेंड इंडिकेटर, थर्ड इंडिकेटर, फोर्थ इंडिकेटर. जस्ट फॉर आवर रेफरेंस आई एम राइटिंग दिस. ओके, नाउ फर्स्ट इंडिकेटर हमारा क्या है, फिनोप्थलीन है. फिनोप्थलीन है, राइट. अब एसिड में फिनोप्थलीन क्या कलर देता है, कलरलेस ही रहता है. यस, सो इट विल रिमेन कलरलेस. बेस में क्या हो जाता है फिनोप्थलीन यार, बेस में टर्न्स लाइट पिंक. थैंक यू कूल रूबिक्स. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड इंडिकेटर क्या है यार, अपना सेकेंड इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज. न्यूट्रल में तो वो ऑरेंज रहता है, बट एसिड में क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, और बेस में क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है. नेक्स्ट इंडिकेटर अपना है चाइना रोज. शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं ताकि फटाफट तुम लोग देख पाओ. चाइना रोज एसिड में क्या है, डार्क पिंक है. बेस में क्या है यार, बेस में वो हो जाता है ग्रीन. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. नेक्स्ट वी हैव ब्लू लिटमस. ब्लू लिटमस एसिड में हो जाएगा आपका रेड, बेस में वो ब्लू ही रहेगा. तो यार हमें ये कलर्स पता चल गए. अब ऑप्शन डी क्यों सही था, बेकिंग सोडा. हम खाली एक इंडिकेटर उठा के देख लेंगे. ये यहां तक आपको सारे कलर्स रिवाइज हो गए. यस, बिल्कुल बिल्कुल. सो कोई भी एक इंडिकेटर उठा लो, यू विल गेट एट द करेक्ट आंसर, यू विल अराइव एट द करेक्ट आंसर. चलो हमारा पी क्या है, बेकिंग सोडा विच इज अ बेस. तो फिनोप्थलीन के साथ, मान लो मैंने फिनोप्थलीन इंडिकेटर उठाया, फिनोप्थलीन के साथ बेस क्या देता है, पिंक देता है. बिल्कुल करेक्ट. क्यों हमारा क्या है, शुगर सोल्यूशन, न्यूट्रल है, तो शुगर सोल्यूशन फिनोप्थलीन के साथ कलरलेस ही रहेगा. नेक्स्ट हमारा क्या था, विनेगर, जिसमें क्या है, एसिटिक एसिड, मतलब एसिड प्रेजेंट है, तो फिनोप्थलीन एसिड की प्रेजेंस में भी कलरलेस रहता है. एंड लास्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हमारा एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट. फिनोप्थलीन के साथ पिंक दे देगा. मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर के हेल्प से निकाल दिया. यू कैन पिक अप एनी इंडिकेटर. विवेक, इट्स NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वेरी गुड रुद्र. रुद्रस लाइक मैम बिल्कुल लर्न हो गया. थैंक यू यश. सो दिस ब्रिंग्स अस टू दिस आंसर. You can pick up any indicator. I've told you the color changes in all the indicators. ना मैंने फिनोप्थलीन की हेल्प से सॉल्व किया, आप किसी भी हेल्प से कर सकते हो. वेरी गुड लक्षित. Awesome. So good to see that. ऐसे color actually acids bases ना, they're adding a lot of colors to our lives. और तुम लोग कितने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिए. वेरी गुड. थैंक यू सुमिता. इट्स ओके आयशा, गलत आंसर है, कोई बात नहीं. गुनगुन wants to do it with the litmus paper. Definitely you can do यार, litmus paper से भी कर सकते हो. Yes, correct. Very easy. Oh, nice. Good to know that. Chalo, let's move on to the next question. Priya, a class 8 student, collected the following items. 1 to 6 आपको कुछ items given है. And she tested them with different indicators. Toothpaste, vinegar, curd, lemon, baking soda, limestone. You need to know the nature of all these. Okay. Fill in the blanks by selecting an appropriate option. She observed that with P, methyl orange indicator turned yellow, while with Q, China rose indicator turned magenta.
क्विकली विच ऑप्शन डू यू थिंक इज राइट? अच्छा चलो लेट्स सॉल्व दिस वन टुगेदर, ये साथ में सॉल्व करते हैं। देखो यार P जो है वो मिथाइल ऑरेंज में येलो दे रहा है, तो P जो हमारा हुआ वो क्या हुआ? बेसिक सब्सटेंस हुआ। Q जो है हमारा वो चाइना रोज को मजेंटा में कन्वर्ट कर रहा है, तो Q क्या हुआ? हमारा एसिडिक हुआ। बस अब यही फिगर आउट करना है कि बेसिक सब्सटेंसेस कौन से और एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से हैं। सो क्विकली देखते हैं यार, चैट में मुझे फटाफट से बताते रहना। अरे तुम लोग बहुत ग्रेट हो, यू ऑलरेडी अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर, दैट द आंसर इज ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। देखते हैं ध्यान से। टूथपेस्ट हमारा क्या हुआ? बेसिक हुआ। विनेगर हमारा एसिडिक हुआ। कर्ड हमारा एसिडिक हुआ। लेमन, इसमें भी तो सिट्रिक एसिड है, तो एसिडिक हुआ। हाँ, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है ना, कर्ड में आपका लैक्टिक एसिड हो गया, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड हो गया। अच्छा, अब बेकिंग सोडा हमारा बेस हुआ। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बेस हुआ। तो यार 156 हमारे बेसिस हैं, 2, 3, 4 हमारे एसिडिक हैं। तो बस वहां से हमें मिल गया आंसर। P हमारा बेसिक हो गया 156, Q हमारा एसिडिक हो गया 2, 3, 4। So option C was the correct answer. Very good all of you. It's okay Dhanshri, start solving the questions now. That's completely okay. Alright, let's move on to the next question now. Observe the given figure carefully, which represent the activities carried out to study different zones of candle flame. Which of the following statements are incorrect? You have to figure out is or are. कौन कौन से यार स्टेटमेंट्स गलत लिखे हैं, बेसिकली हमें ये फिगर आउट करना है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कि क्या गिवन है। इन फिगर 1 द वायर टर्न्स रेड हॉट फास्टर व्हेन इट इज केप्ट इन द ल्यूमिनस जोन एज कंपेयर टू व्हेन इट्स केप्ट इन द नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, इन द सेकेंड वन a blackish ring is formed on the glass slide because of unburned carbon particles of the luminous zone, and third में a flame is produced at the end of the glass tube because wax vapors present in the non-luminous zone rise up to the glass tube and burst into flame. यार ये क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है बहुत बच्चे घबरा जाएंगे कि मैम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स गिवन है। यस गिनी क्वीन, प्लीज राइट इट। तो यार अब इसमें से आपको ऑप्शंस देखो क्या है, ये आपके ऑप्शंस है। यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 क्या ये गलत है, या खाली 2 गलत है, या 1 and 3 गलत है, या 1, 2, 3 सब कुछ ही गलत दिया है। मतलब क्वेश्चन में कुछ सच लिखा ही नहीं, सब कुछ झूठ लिखा है। ऑप्शन सी, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत स्मार्ट बनते जा रहे हो धीरे धीरे। ओके, फर्स्ट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है हमारा। वायर टर्न्स रेड हॉट फास्टर व्हेन इट्स केप्ट इन द ल्यूमिनस जोन। यार हमें पता है जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो हमारा नॉन ल्यूमिनस होता है। आउटर मोस्ट जोन कौन सा है हमारा? ब्लू, वो हमारा नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस हमारा येलो ऑरेंजिश जोन है। तो सबसे ज्यादा हॉट तो आउटर मोस्ट जोन होता है ना, जहां पे कंप्लीट कंबस्टन होती है, तभी वो हॉटेस्ट है। जो ल्यूमिनस मिडिल जोन है हमारा वो हॉटेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, अ ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड बिकॉज ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ऑफ द ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस हमारा मिडिल जोन है जहां पे पार्शियल कंबस्टन हो रही है। बिल्कुल यार, यहाँ पे ब्लैकिश रिंग फॉर्म होंगे, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होंगे। सो सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू था। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्यों गलत है। A flame is produced at the end of the glass tube because wax vapors present in non-luminous zone rise up in the glass tube and burst into flame when lighted matchstick is brought near it. See, unburned wax vapors आपके पास हैं जो glass tube में enter कर रहे हैं, matchstick के साथ वो burn कर रहे हैं, flame बना रहे हैं, मगर वो non-luminous zone में नहीं है, वो आपके innermost zone से हैं, वो आपके innermost zone से हैं। So statement 3 is also wrong and this brings us to the correct answer that 1 and 3 are incorrect. How many of you could figure this out? I saw a lot of you just quickly mentioned कि मैम ऑप्शन C को लॉक कर दिया जाए। गौतम, very soon. About to start. तुक्का था. You got it wrong. Oh, you got it right. चलो, I hope
इन एनी केस यू अंडरस्टूड कि सही आंसर क्या है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज तो बहुत इजी सा प्यारा सा क्वेश्चन. ये चैप्टर हमने करा हुआ है, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज दिस क्वेश्चन. A few materials are listed in the box: polythene, bakelite, Teflon, polycot, PVC. कुछ materials आपको given है. अब आपको figure out करना है कि correct statement कौन सी है. Let's solve this question together. 1 that is polythene, 2 that is bakelite and 5 that is PVC are thermoplastic. बिल्कुल गलत यार. bakelite थोड़ा thermoplastic है. bakelite तो thermosetting plastic है. तो out. This question is ruled out. 4 and 5 are blended fiber. blended fiber होता है mixture of fibers. 4 क्या है? polycot. हाँ यार बिल्कुल cotton and polyester से बना है, blended है. 5 क्या है हमारा? PVC. This is not a blended fiber. Ruled out. Next option देखते हैं. 1 and 3 मतलब polythene and Teflon are linear polymers. बिल्कुल सही यार. linear polymers है, straight chain है उनमें. While 2 bakelite is a cross-linked polymer. बिल्कुल सही यार. This statement is absolutely right. And I can see chat is flooding with option C right now. So very good all of you. Yes गौतम बच्चा, chemistry के Olympiad questions. Yes. Synthetic fiber chapter है यार. I hope you've done that one. Okay, last one. PVC is used as a substitute for making glass, for making windows in aeroplanes. ये तो बिल्कुल गलत है. PVC तो pipes and all में use होता है. क्या use होता है इसमें? As a substitute, perspex या acrylic आप ले सकते हो. Okay. So this brings us to the correct answer. That is option C. Well done. Very good all of you. So good. Atman Singh, Gungun, Sameer, Rati, Creative, Ishita, Gautam, Aditi, Harsimran. Favorite chapter from chemistry. Nice. आयशा पता नहीं यार कहाँ गए. निशी, नाइस नाइस. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करेंगे, अभी बहुत कुछ और करना है. अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 fuels is given below. First statement says it is the most common domestic fuel and is the product of fractional distillation of petroleum. Second statement, एक fossil fuel है जिसमें 95% methane है and is formed deep inside the earth along with petroleum deposits. Third, it is obtained as a gaseous fraction during destructive distillation of coal and is mainly used as industrial fuel. You have to figure out what's 1, 2 and 3. Let's see. A lot of you saying ma'am option C, a lot of you saying ma'am option B. आएंगे शकुंतला, फटाफट से हम केमिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स एंड देन बायो. बी सी. चलो लेट्स सी. ऐसा करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो हमें कोल टार कोल गैस मिलता है. तो कोल गैस मिल रहा है, विच मीन्स कि नेचुरल गैस वाले ऑप्शंस तो रूल आउट हो गए. हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस बचे हैं अभी. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं. इट्स अ फॉसिल फ्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ 95% मीथेन. हमें पता है यार 95 मीथेन मतलब नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की. यार यहां तक तो ये भी सही है, दोनों ऑप्शंस ठीक है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं इट्स अ डोमेस्टिक फ्यूल. डोमेस्टिक फ्यूल है यार, घर पे कौन सा यूज हो रहा है? एलपीजी, राइट? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज हो रहा है. दिस ब्रिंग्स अस टू ऑप्शन बी बीइंग द करेक्ट आंसर एंड सी भी गलत हो गया. डीजल ऑयल तो डीजल इंजन में यूज होगा ना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. थर्ड स्टेटमेंट से सॉल्व करते करते फर्स्ट तक गए. वेरी गुड. लामा, लक्षित, आयशा, लता, अदिति, ऑसम ऑल ऑफ यू. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question says, study the given table carefully and you have to identify the substance whose properties are not mentioned correctly. किसकी properties सही नहीं लिखी हुई? यार हमें पता है जब हम metals की बात करते हैं तो metals usually जो हैं malleable होते हैं, वो ductile होते हैं, वो lustrous होते हैं, वो hard होते हैं, generally ऐसा होता है. Non-metals नहीं होते. Very good. Unknown artist ने before I could complete the entire question, उन्होंने पहले ही आंसर मार्क कर दिया कि मैम ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो एक बार देखते हैं कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. यार सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की. आयरन यार मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, लस्ट्रस भी है,
हार्ड भी है, सब कुछ गिवन है यार। तो आयरन वाला जो हमें गिवन है वो बिल्कुल सही गिवन है, इट्स मेटल राइट, बिल्कुल सही गिवन है। नेक्स्ट हमारा एल्यूमिनियम, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, लस्ट्रस भी है, हार्ड भी है। तो एल्यूमिनियम का भी जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यार कार्बन की। कार्बन में देखते हैं, देखो ये हमारा मेटल था, ये हमारा मेटल था, ये हमारा नॉन मेटल है। अब यार कार्बन डक्टाइल तो नहीं होता ना, ये कह रहे हैं यार डक्टाइल है, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग, इंफॉर्मेशन गलत गिवन है हमें। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं यार, मैग्नीशियम अगेन हमारा एक मेटल है, राइट, मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, लस्ट्रस भी है। यार इन्होंने क्या मार्क कर दिया, ये भी गलत है, ठीक है। लास्ट हमारा है गोल्ड। गोल्ड भी यार हमारा मेटल होता है, यार ये कह रहे डक्टाइल नहीं है, गोल्ड तो मोस्ट डक्टाइल मेटल है हमारा, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दैट मीन्स कार्बन, मैग्नीशियम, गोल्ड, ये जो तीनों की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है ये गलत है। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी हैड टू पिक अप किसकी इंफॉर्मेशन करेक्टली मेंशन नहीं है। बिल्कुल गोल्ड के ग्राम से आप ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर की वायर निकाल सकते हो, डक्टाइल है यार। ये शकुंतला बिल्कुल, वेरी गुड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, चलो ये फटाफट से तुम लोग बताओगे, which of the following reactions results in evolution of heat? So this is the last chemistry question, so I want you to solve this. चलो quickly. अरे बहुत महंगी होती है हरसिमरन गोल्ड वायर्स। वेरी गुड विद्या। एवोल्यूशन ऑफ हीट किस में हो रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रेकिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, कॉपर कार्बोनेट इज ब्रेकिंग इनटू कॉपर ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिविंग यू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इनमें से एवोल्यूशन ऑफ हीट किस में हो रहा है? अभी तक मुझे शकुंतला को छोड़ के किसी का करेक्ट आंसर चार्ट में नहीं आया। फटाफट से फटाफट से। आयशा थोड़ा सा आंसर गलत। तुम लोग ने न्यू टर्म्स देखी और तुम लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड सुहानी, वेरी गुड निशी। चलो लेट्स सी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है यार। जब भी हम हीट की बात करते हैं यार, हीट या तो अब्सॉर्ब होती है किसी रिएक्शन में या क्या होती है, रिलीज होती है। या तो अब्सॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर एब्सॉर्ब हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर रिलीज हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। अब यार ध्यान से कॉमन सेंस से बात सोचो। ऑप्शन ए देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कर रहा है। कोई भी चीज ब्रेक करते तो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वी नीड एनर्जी। अब्सॉर्ब करेंगे हम कहीं ना कहीं, वी रिक्वायर दैट एनर्जी, वी नीड दैट एनर्जी, तभी तो यार मेहनत से कुछ तोड़ पाओगे। तो इवॉल्व तो नहीं हो रही, रिलीज तो नहीं हो रही, तो ये क्या है, गलत ऑप्शन हो गया। सिमिलरली कॉपर कार्बोनेट में देखो, कॉपर कार्बोनेट ब्रेक कर रहा है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ ब्रेक करने के लिए एनर्जी इज नीडेड, इट्स नॉट इवॉल्व्ड। रॉन्ग। वाटर भी ब्रेक कर रहा है, H2O वाटर है, H2 और O2 में ब्रेक कर रहा है। कैसे करेगा, एनर्जी चाहिए तभी कर पाएगा, खुद से नहीं कर पाएगा। तो अगेन ये भी गलत हो गया। लास्ट देखो, ध्यान से देखो, ग्रेड 7 में हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गाइस। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सोडियम सल्फेट सॉल्ट प्लस वाटर, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। रिलीज होती है हीट, इवॉल्व होती है हीट। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। सो I hope you've understood. Yes, yes, अभिनव बिल्कुल करेक्ट। Yes, गुनगुन, भावेश करेक्ट, अनिका ठीक है, आयशा यस, प्रशांत, विश्व, ऑसम ऑल ऑफ यू, बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। So if you've enjoyed solving all the chemistry questions, I want all of you to hit the like button फटाफट से। And yes, yes, फटाफट से पानी पी लो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। You have to do physics questions, you have to do biology questions.
जो चैप्टर्स आपने कवर नहीं करे, अगर उनके क्वेश्चंस आते हैं कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड हमें अब मैजिक से बुलाना है, फटाफट से एक मैजिक से बुला लेते हैं सौरभ सर को। Yes, so thank you guys, thank you so much इतने पेशेंस के साथ केमिस्ट्री क्वेश्चंस समझने के लिए। आई नो कुछ क्वेश्चंस टफ थे, बट तुम लोग ने यार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आयशा सिंह, मैजिक से बुलाया जाए सौरभ सर को। नाइस। ओके ओके, डन डन, वेरी गुड रुद्र। अच्छा यार, फिजिक्स के लिए कौन कौन सुपर एक्साइटेड है? डन डन, बिल्कुल। कुछ बात कर लेते हैं आपसे, फटाफट से पहले मुझे ये बताओ, हु ऑल आर सुपर एक्साइटेड फॉर फिजिक्स? कौन कौन है? सो मेनी ऑफ यू, सो गुड टू सी दैट यार। हाँ बिल्कुल, बच्चे कह रहे मैजिक से सौरभ सर हाजिर हो, बिल्कुल मैजिक से ही हाजिर होंगे। नाइस यार गाइस, कीप सिपिंग वाटर इन बिटवीन, बहुत जरूरी है। देखो मेरी तो ये मैजिक बॉटल बन गई है, बिकॉज इट्स ग्रीन इन कलर। आई एम सिपिंग वाटर एंड आई एम टेलिंग यू कि बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो यार देखो कितनी एनर्जी से तुम लोगों ने केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे, डबल एनर्जी से फिजिक्स के सॉल्व करने, ट्रिपल एनर्जी से बायोलॉजी के सॉल्व करने, ताकि एज अ होल हम साइंस को मास्टर कर सके। थैंक यू आयशा, थैंक यू बच्चा, वेरी गुड। हरसिमरन, हरसिमरन फटाफट से भाग के पियो। सुपर डुपर एक्साइटेड, गुड वन। आबरा का डाबरा, सौरभ सर आ जाइए। नाइस वन सृष्टि। अजय, हाइड्रोजन गैस बच्चा। थैंक यू नरसिंगो। यस आर्यन, गुड टू नो दैट बच्चा। अमेजिंग अमेजिंग, बट इट लुक्स ऑरेंज इन कलर। हाँ एक्चुअली जो बैकग्राउंड का कलर है ना वही दिखेगा। लेट मी सी इफ आई हैव अनदर, I have another green bottle here. This will also look like a magic bottle. See the portions which are green, they are appearing to be orange. All right, now since you people said कि सर को मैजिक से बुला लिया जाए, तो बिल्कुल सर को मैजिक से बुलाते हैं। एक बार सब लोग चैट में मैजिक वर्ड लिख दो, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव इमोजीज के साथ, एंड देन सौरभ सर विल बी राइट हियर टू डिस्कस योर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज physics. Nice. So there is a lot of magic in the chat right now. बिल्कुल बिल्कुल, I want all of you to take care बच्चा। जादू, बिल्कुल बिल्कुल, जादू से सर आने वाले हैं। सिम सिम, आबरा का डाबरा। नाइस। ओके गाइस, बाय बाय। यस, जादू। सो पीपल ऑन हेवी डिमांड, जनता की भारी डिमांड के बाद हम प्रकट होते हुए, चलो भाई लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स क्वेश्चन। सो मैम, कैसा रहा केमिस्ट्री सेशन? बहुत अच्छा रहा सर। कुछ क्वेश्चंस इनको टफ लगे, जो शायद इन्होंने चैप्टर्स अभी कवर नहीं करे हैं, बट इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये लोग लगे रहे, समझते रहे। So hats off to their patience. हाँ हाँ, तथास्तु बच्चे, प्रकट हो गए हम। तो यस, देखो भाई, केमिस्ट्री इज डन एंड विल हैव फिजिक्स। थोड़ा स्पीड में करेंगे, है ना? यस, यू वांट द बुक? हाँ, ऑल राइट, ठीक है। ओवर टू यू सर। ओके एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। मेरी आवाज गूंज रही है, अब नहीं गूंजेगी। यस, एंथे, एंथे देखो, इफ यू फाइंड ओलंपियाड एज इजी, यूल फाइंड एंथे एज इक्वली इजी ऑल्सो, है ना? डोंट वरी। चलो भाई, चलो सुनो सुनो, अब ध्यान से बात करते हैं। आवाज तो नहीं गूंज रही, जल्दी बताओ। ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग गुड? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ हेड्स अप। थोड़ा अब एनर्जी वापस लेके आओ। स्पीड करेंगे, स्पीड में करेंगे फिजिक्स। यस,
हाँ बुक गायब हो गई. नमस्ते. Come on, come on, come on. It's a little low, huh? Is it? Yes, अब बढ़िया है ना? बहुत अच्छे. चलो. ठीक है, केमिस्ट्री भारी लगा? हेलो निधि. Yes, अरे ऑफ कोर्स. प्रणाम प्रणाम. Yes guys, come on. भारी लगा केमिस्ट्री? Nope. मैथ्स ओलंपियाड. हाँ, we will do मैथ्स ओलंपियाड. Don't worry. साइंस खत्म कर लेते हैं, खुशबू मैम से बात कर लेते हैं, बस मैथ ओलंपियाड आ जाएगा. हेलो. एको नहीं, एको आ रहा है. लता बस देखो, फिजिक्स आधे घंटे में निपटेगा ऐसे. यस. ज्योति जी के विल डू. एको इज इट? नो. जल्दी बताओ एवरीवन, गिव मी अ हेड्स अप. नो एको, राइट है ना? एको वेको कुछ नहीं है, सब कुछ चिल है एकदम. मेरे को चेक करने दो. एको आ रहा है क्या? नहीं, अरे एको नहीं आ रहा यार. यस. ठीक है, स्टार्ट करें. फिजिक्स क्वेश्चंस, शैल वी स्टार्ट? देखो, फिजिक्स क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट. जल्दी करेंगे, इंट्यूटिव भी है ना? यस, कम ऑन कम ऑन. बहुत बढ़िया. पानी वानी पी लिया सबने? रेडी? एनर्जी वापस आ गया? ओके, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट देन. सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू, अगर किसी ने अब तक लाइक नहीं किया है, अभी के भी लाइक कर दो, है ना? ठीक है. और फिजिक्स है, बायो है, दोनों करेंगे, स्पीड में करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए, है ना? देखो, क्वेश्चंस आते हैं टोटल 50. टोटल देयर आर 50 क्वेश्चंस इन साइंस ओलंपियाड्स एंड यू गेट 1 hour, व्हिच मींस टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. लेट्स सी हाउ वी कैन इंप्रूव अपॉन टाइम. हम पे बहुत टाइम नहीं होता स्पेंड करने के लिए, सोचने के लिए. तो टुडे फिजिक्स विल टेक केयर ऑफ टाइम एज वेल. यस, है ना? शुरू किया जाए. बहुत अच्छे. ये तो एंड में आता है. अरे एंड में नहीं, ये मैं अभी याद दिला रहा हूं. एंड में क्या पता तुम भूल गए. मेक श्योर यू लाइक, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर समवन न्यू. ठीक है. अगर आप कोई नए हो, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज भाई सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, है ना? करेक्ट. यस. अरे नेहा, बात हो गया टीम से, डोंट वरी. सॉरी निधि, डोंट वरी. चलो गाइस, कम ऑन कम ऑन. आर्यन, एंथे में there are 35 questions. Come on. Yes, people. First question on your screen from physics. And by the way, ये क्वेश्चन हम पहले डील कर चुके हैं. तुम में से कितने लोग को याद है? पहले ये बताओ. How many of you remember that we have dealt with this question? Yes, Jyoti. Poll question I'll give you, don't worry. Yes, you remember, right? We have dealt with this question. आसान क्वेश्चन है ये. Correct? Nice, nice. Very good, very good. चलो. You want a poll? I'll give you a poll. A, B, C, D, 4 options. पोल दे रहा हूं. सब्र करो, सब्र करो. जिन लोगों ने क्वेश्चन देखा है पहले, उनके लिए तो इजी है थोड़ा. Got that, no? Yes, yes. Nice, nice. Very good. Very easy question, easy question. देखो, simple है. ज्यादा नहीं सोचना, बहुत आसान, बहुत अच्छे. Is the poll up? Yes, see, the poll is up. A, B, C, D. क्या बोलते हो? The given diagram shows 5 bulbs connected to 2 dry cell. Doesn't matter. भाई एक होता, दो होता, मेरे को मतलब ही नहीं है. Because listen to me. What is the question telling you further? When one of the bulbs becomes faulty, है ना? जब कोई एक बल्ब फॉल्टी हो जाता है, the other 4 bulbs remain lighted. बाकी 4 बल्ब जलते रहते हैं, है ना? Which bulb is faulty? यानी कि कौन से बल्ब खराब होने के बाद भी बाकी 4 बल्ब जलते रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा. That is the question, right? If let's say one of the bulb gets faulty, other 4 bulbs will keep glowing. It won't matter to them, right? That's the question. Now, will it be 1, 2, 3 or 1 only, 3 only, 2 or 4 only, 2 or 4 or 5 only, right? ठीक है? I can see we have 54 votes
and we have 74 people. I'll give you 10 more seconds. Yes, come on people. देखो आसान क्वेश्चन है, इसमें लेट नहीं करना. चलो 3, 2, 1, time up. Let's see. Option C has got 62%. So option C is the winner according to you, है ना? Okay, let's see, देख लेते हैं. देखो भाई, क्या पूछा है हमसे? कौन सा बल्ब खराब होने पे बाकी 4 जलते रहेंगे? तो एक बार ट्राई करते हैं कौन कौन सा खराब होता है. Let's say, if number 5 becomes faulty. If number 5 becomes faulty. Faulty का मतलब, sir 5 is faulty, मतलब let's say this is open, है ना? If 5 is faulty, मतलब this is open. अब ध्यान से सुनना. I'll explain this very clearly, लेकिन ध्यान से सुनो. ठीक है? This is open. बहुत बढ़िया. Current will start from here. Current चलेगा, बढ़िया. Current is going. Bulb number 1, अरे वाह, bulb number 1 will glow. Then bulb number 2, bulb number 3, अरे वाह. Bulb number 2, it's a closed circuit. Very good. Bulb number 3 and bulb number 4, still a closed circuit. Very good. You always have to form closed circuit. यानी कि 5 नंबर अगर खराब हो गया, बाकी 4 जलेंगे. Not a problem. Very good. अब बाकी देखते हैं, है ना? इस तरह से करके देखो. Always rough diagram बनाओ. You always make a rough diagram and form the closed circuits, right? अब देखो, if number 4 gets faulty, means this is open. This line is not there. If number 4 is faulty, है ना? Again, current will go. बढ़िया, nice, very good. Bulb number 1, अरे वाह. Then bulb number 2 से there is one closed circuit. Very good. Bulb number 3 से, sir bulb number 5 से होते हुए एक और closed circuit. अरे वाह. Rest of the 4 bulb will glow, है ना? Yes. बहुत अच्छे. ये भी easy है. अब अगर मैं bulb number 2 को खराब कर दूं, let's say if I make bulb number 2 faulty, मतलब this line is not there. Okay, then what happens? Sir, current will go like this. अरे वाह, bulb number 1, bulb number 3, bulb number 4 is one closed loop and bulb number 5 is one closed loop, है ना? भाई आप स्टार्ट करो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और वापस नेगेटिव पे एंड कर दो लूप बनाते हुए, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो फाइन. मतलब 2, 4 and 5 if they get faulty, others it won't matter. अब सोचो, अगर मैं बल्ब नंबर 1 को खराब कर दूं, let's say this is खराब, this is open, मतलब current will start nice और let's say you can start making closed loop and यहां पर आके अरे यार there is only one way and that way is broken, means it won't, nothing will glow, right? Same with 3. अगर 3 वाला खराब है, this is one loop, closed loop, बढ़िया, 1 and 2 will work. But what about this? इसके आगे करंट जाएगा? नहीं जाएगा. क्यों? 3 तो खराब है. There is no bridge. भाई आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे जाएगा? Right? है ना? Very good. So that's why the answer is 2 और 4 और 5 option D. C वालों, आपने 2 किया, 4 किया, आप 5 भूल गए. Right? That's why. Okay? You got the mistake? समझ में आ गया सबको? Yes, D is the answer. Very good. बहुत अच्छे. चलो, next question. अगला question. भाई हरसिमरन, फॉर साइंस वी हैव टू डू समटाइम्स दीज थिंग्स. चलो, है ना? नहीं, हाँ पीपल, निधि हैज अ वेरी गुड पॉइंट. दिस क्वेश्चन में ना देयर इज अ वर्ड और, मतलब आइदर 2 इज फॉल्टी और 4 इज फॉल्टी और 5 इज फॉल्टी. एंड नहीं है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2, 4, 5 एक साथ बंद कर दिए. ना. ओके, यस. चलो नेक्स्ट. समझ आ गया ना? बहुत अच्छे. स्क्रीन ब्लर है. लता, मेक श्योर यू चेंज द वीडियो सेटिंग्स. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. यार ये आसान क्वेश्चन है काफी, और ये हमारा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन भी है. ओके, यस. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड अर्थ ऑन द डे ऑफ फुल मून एंड न्यू मून? क्या लगता है? Yeah, it's okay. देखो, if you made mistake, it's a very good thing, not a problem. But make sure you learn it, how to correct that mistake, right? It's okay, Sanskriti. चलो, guys, come on. Next question. भाई, sun, moon, earth, new moon and full moon, what is the position? And let me tell you, what is the meaning of this? It means moon, earth, sun on a full moon, or is it sun, earth, moon, earth, or earth, sun, moon?
Yes, people are saying option B, huh? Yes. Nice. See, poll is also up. Very good. चलो भाई, देखो 4 ऑप्शन है. फुल मून मतलब क्या होता है और न्यू मून मतलब क्या होता है? पहले ये बता दो मेरे को. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल मून एंड न्यू मून? कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी. ये तो मैम को भी पता है. यस, फुल मून मतलब पूर्णिमा का चांद. करवा चौथ आ रहा है ना, मम्मियों को देख लेना. राइट. एंड न्यू मून मीन्स अमावस. राइट. हाँ, full moon is Purnima, new moon is Amavas, means no moon, it's a black moon, right? And full moon means full glowing nice moon, right? हाँ, बहुत बढ़िया. बस सोचो, ऐसे इमेजिन करके देखो क्या हो सकता है. I would see there are 60 votes. चलो ठीक है, I'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. जो भी पोल रन कर रहे हैं, लेट्स एंड द पोल. हेलो. हाँ, यस, 73%. हाँ, वेरी गुड. यू आर सेइंग 73% आर सेइंग बी. करेक्ट. देखो, अब ध्यान से देखो. आई विल टेल यू. पहले में क्या बोल रहे हैं? अर्थ इज इन द मिडल. अर्थ इज इन द मिडल. ऑप्शन डी इज सेइंग सन इज इन द मिडल ऑफ अर्थ एंड मून, है ना? दिस इज सन इन द मिडल, सन इन द मिडल. तो अब ध्यान से देखो, फुल मून. फुल मून मतलब क्या होता है? सन इज नॉट अ सोर्स ऑफ, सॉरी, मून इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना? यस, लिसन टू मी, लिसन टू मी. मून इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट. मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन. सन कभी अर्थ और मून के बीच में आ सकता है. भाई, अर्थ और मून के बीच की बात है, सन कहां से आएगा? बीच में थर्ड पार्टी है वो तो, राइट, है ना? करेक्ट. सो सन कैन नॉट कम एवर इन बिटवीन मून एंड अर्थ. दिस इज योर फर्स्ट क्लू. जहां जहां सन बीच में दिख रहा है उसको तो हटा दो पहले ही, राइट? नाउ लिसन टू मी. फुल मून कब आता है? फुल मून कब आता है? जब सन होता है इधर, अर्थ होता है बीच में और मून होता है इधर. यानी कि सन का लाइट पड़ता है मून पे और अर्थ वालों को दिखता है, यानी कि फुल मून. न्यू मून कब होता है? सन है उधर, राइट? हाँ, पोल एंड हो गया, राइट? अरे नहीं अदिति. राइट, है ना? तो इसलिए फुल मून कब है? सन है, अर्थ है, मून है. मून इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन कंप्लीटली. और ये क्या है? सन है, मून है, अर्थ है, राइट? या गुनगुन पुट इट ऑन चार्ज, है ना? यस बिल्वा, यू आर राइट. जहां जहां सन बीच में है, ऑल दोज आर रॉन्ग. भाई, यहां पे सन बीच में है, सर ए ऑप्शन इज रॉन्ग. इसमें सन बीच में, रॉन्ग. इसमें सन बीच में, रॉन्ग. बी ऑप्शन, विदाउट थिंकिंग, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सर बी ऑप्शन. टन टना टन टन, है ना? मून, अरे शकुंतला, मून इज ऑफ अर्थ. हेयर वी आर. इतना नहीं सोचना कि अर्थ, फुल मून और न्यू मून अपने मून की बात होती है ना. ऐसा थोड़ी कि अर्थ को ले लिया एंड मून ऑफ जुपिटर. नो नो, ऐसा थोड़ी होता है. दिस वाज इजी वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आसान था यार ये वाला, राइट? शैडोज. हाँ, सो नया, शैडोज आर लाइक मून कीप्स ऑन मूविंग, है ना? मून कीप्स ऑन मूविंग एंड दैट्स वेयर इट्स फुल. एंड देन on this side, एक ना, on BYJU'S app there is a nice video of Avinash sir, and watch it. And I think that video is on YouTube also, right? So in this question I told you कि देखो, यहां फुल मून है, बढ़िया लाइट चमक रही है, यहां पर आधा चमक रहा है, यहां आधा, यहां और कम, क्रेसेंट मून, एंड दिस इज न्यू मून, राइट? सो दैट्स व्हाई. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. समीर, न्यू मून होता है एक तरह से अमावस का चांद, मीन्स
मून इज नॉट विजिबल, इट्स ब्लैक, अमावस, राइट? अब ऐसे टाइम पास नहीं करना। यस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फोर्स एंड प्रेशर हमने किया है, इसका आंसर सही आना चाहिए, आई एम टेलिंग यू। एंड यस, विल स्टार्ट द पोल। कम ऑन, देखो 3 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड 4 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ओके भाई, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। बट देयर डायरेक्शंस आर नॉट गिवन, है ना, डायरेक्शन हमको नहीं पता। What is the possible range for the magnitude F of the net force acting on the object? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसको मैं निकालूंगा ऐसे 1 मिनट के अंदर। Yes, timing is important in Olympiad guys. Go on, 50 questions, 1 hour. ज्यादा टाइम नहीं होता अपने पास, राइट? चलो, for this I'll give you 30 seconds. अरे, yeah, you are right. My phone battery also low. Come on. This is easy question. देखो ऑब्जेक्ट है, उस पे 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं. There are 2 forces acting, 3 Newton, 4 Newton. Directions is not given. What is the range in which net force can come? Is it between 3 to 2 Newton? Is it between 0.5 and 4 Newton? Is it between 4 Newton and 2 Newton? Is it between 1 Newton and 7 Newton? चलो 5 seconds more. 5, 4, 3, 2, 1. Let's end the poll. हो रहा है, खत्म हो रहा है, रुक जाओ। यस, ऑप्शन ए इज 45%, ऑप्शन बी इज 28%, ऑप्शन डी इज 11%। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, लिसन टू मी। Forget about all the cases. Let's take only 2 cases. When both the forces are in one direction, this is the maximum force possible. When both the forces are acting opposite to each other, this is the least amount of net force possible. है ना? Yes. सोचो, हाँ इसका D आंसर है भाई, इसका आंसर D है। क्यों? When force and 3 Newton are acting on the same direction, sir, same direction, force will add. When opposite direction, force will subtract. यानी कि in this net force is 7 Newton towards right. In the second case, when 4 Newton is in this direction, 3 Newton is in that direction, मतलब sir 4 minus 3, यानी कि this is 1 Newton. In which direction? This direction. Yes, इसमें गलती कैसे हुआ? ठीक है? So that's why it is 1 and 7 Newton. देखो, I'm telling you a basic rule. सुनो जरा ध्यान से everyone. Listen to me. एक basic rule सुन लो. अगर 2 फोर्स दिया है ना, मैक्सिमम फोर्स पता है कब होगा? When both are parallel. मिनिमम नेट फोर्स पता है कब होगा? When both are opposite. बस इसको लिख लो अभी. It's very important. It's a basic rule. Wherever question come of 2 forces acting, मान के चलो मैक्सिमम होगा जब दोनों पैरेलल में है, यानी कि दोनों ऐड हो रही हैं. मिनिमम होगा जब दोनों ऑपोजिट हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. यस, हाँ, गॉट इट, वेरी गुड, है ना? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन. इजी था यार ये वाला. हाँ, आर्यन हैज अ वेरी गुड पॉइंट. भाई चैट में आंसर देख के बिलीव मत करना, है ना? अपना आंसर देखो, पोल लगाओ, अब गलत हुआ तो देखी जाएगी, कुछ नया सीख लेंगे, राइट? द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूज मी. हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं. चलो गाइस, कम ऑन. दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना. डोंट मेक मिस्टेक इन अ हरी. एंड यस, विल स्टार्ट द पोल. कम ऑन. If the time taken by the bob of a pendulum to move from point R is 5 seconds. देखो, poll started. Then the time taken by it to complete its one oscillation. हमको पता होना चाहिए कि one oscillation किसको बोलते हैं, है ना? अगर you got that, means this question is done. ठीक है? One oscillation किसको बोलते हैं, अगर हमको ये पता है, ये question तो एकदम लड्डू question है, I'm telling you. Come on. R to P जाने में लग रहा है 5 सेकेंड. आपको बताना है कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना? एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं, यह पता होना बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कम ऑन. क्या बोलते हो? आसान है ना क्वेश्चन ही तो, राइट? चलो, I'll give you
I'll give you 5 more seconds या 10 more seconds. चलो 5 more seconds. मैंने जब बोला था तब 10 था. 3, 2, 1. Let's end the poll. हाँ जी. B is 50%, C is 37%. A little more than 15 seconds. Yes, Nidhi, you can say that. Any other mithai also? See, Ankita ma'am gave us Kaju Katli today, but I don't know why. We end up calling an easy question laddu. Very good, nice, nice. अरे सुनो जरा ध्यान से. एक ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? मेरी बात सुनो जरा. Is it visible? हाँ, this is visible. ऐसे देखो. ठीक है. This is center. This, and this. This is one oscillation. Sir, if I start from here on the end, then what? Half oscillation, half another oscillation, one oscillation. ठीक है. This is one oscillation. If you start from this end, this and this, it is one oscillation. If you start from middle in this direction, sir, okay, it goes to this end, comes back to the middle, goes to this end, comes back to the middle. ठीक है? Yes. हाँ, speed decrease नहीं, no. देखो speed की मतलब नहीं है. Don't think about speed. अरे मेरा पेन कहाँ गया? हाँ, yes. Don't think about speed. Always think कि उसको ये periodic motion है ना? इसका मतलब यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, और उतना ही टाइम इतना ऊपर जाने में लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहां लगेगा. यानी कि 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, मतलब टोटल 20 सेकेंड्स. राइट? इतना नहीं सोचना. करेक्ट. पीरियोडिक मोशन है, टाइम तो हमेशा सेम लगेगा इसको. राइट? बढ़िया. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज 20 सेकेंड. या आई नो. इफ यू ओवर थिंक ना, हमको लगता है कि सर आर पे स्पीड ज्यादा होगा, पी पे स्पीड कम होगा, मतलब टाइम ना. 5 सेकेंड लग रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में. यानी कि एवरी टाइम मीन टू एक्सट्रीम का टाइम 5 है, एक्सट्रीम टू मीन का 5 है, मीन टू एक्सट्रीम 5, एक्सट्रीम टू मीन 5 अगेन. राइट? गॉट इट? इजी. 5 into 4. दैट्स व्हाई द आंसर इज 20 seconds. एंड दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. अगेन बहुत बढ़िया. चलो भाई अगला क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन यार, दिस इज अ टफ क्वेश्चन. आई बिलीव एंड आई एक्सेप्ट दिस इज अ टफ क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आपके ओलंपियाड में आएगा एंड इफ यू डोंट नो, तुक्का मार देना. नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे भी, तुक्का मार देना. ओके, काजू कतली बोल सकते हैं. थैंक यू. एडिट्स. या इन अ हरी, लॉट ऑफ मिस्टेक्स हैपन इन अ हरी ओनली. इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन गाइस, आई अंडरस्टैंड. आई विल गिव यू अ पोल. नहीं आता है तुक्का मार दो. ठीक है? आई विल गिव यू ओनली 30 seconds. हाँ, ये लॉटरी क्वेश्चन है. ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन दिखे तो तुक्का मार सकते हो. मेरे को पता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये, बट स्टिल गो विद योर गट फीलिंग, है ना? लेट्स स्टार्ट द पोल. इट्स ओके. हाउ कैन आई मेक तुक्का सर? इट्स यू कैन मेक तुक्का. गो विद योर गट फीलिंग. सारे ऑप्शन पढ़ो और व्हाट इज योर गट फीलिंग ना, पुट दैट ऑप्शन. देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज /r ट्रू, बिकॉज 4 ऑप्शंस आर देयर. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मास ऑफ जुपिटर इज 218 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ. सर कौन याद रखता है? आई एक्सेप्ट. ठीक है. ऑर्बिटल प्लेन एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ आर इंक्लाइंड टू एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. सर हमको तो यही नहीं पता ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है. कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, है ना? अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस एंड दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन. ये ऑप्शन मे बी वी आर नॉट क्लियर, लेकिन ऑप्शन कम से कम ये पहला ऑप्शन है जो कि हमको लग रहा है कि शायद लग रहा है सुना सा ना, कुछ लग रहा है. थर्ड ऑप्शन रिलेटेबल सा. लास्ट ऑप्शन, बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स रेडिश इन कलर. अच्छा, सैटर्न का कलर क्या? ओके, सैटर्न क्या रेडिश लगता है क्या? सो आई सी. ठीक है, चलो 5 seconds मोर. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. इट्स ओके. गो विद योर गट फीलिंग. आंख बंद करो, अकड़ बकड़ करो और पेल दो. यस.
हाँ जी, देखिए जरा क्या आया रिजल्ट। हाँ रुको जरा, पोल एंड हो रहा है, एक सेकेंड, गिव मी सम टाइम। यस, ऑप्शन डी इज 34. See, I think like you, what is the lottery question? The lottery question is where it's all about luck. D होगा, D is second and third, हाँ? Okay, let's see. देखो, listen to me. The mass of Jupiter is 218 times. Actually, it is 318 times. But I accept, sir, ऐसे याद थोड़ी रहता है. Okay, ठीक है. Orbital plane and equatorial plane of Earth are inclined to an angle of 66.5 degrees. सुनो जरा ध्यान से. I'm telling you. तुक्का लगाया था ना, कोई बात नहीं. सुनो जरा ध्यान से, है ना. देखो, यहां पर है अर्थ, सॉरी ये है सन. लेट्स से सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, है ना. मान लेते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, राइट. सो ये जो प्लेन है ना, मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है और इसके अराउंड क्या लिया जाए, नहीं रुक जाओ, हाँ चलो ये लेते हैं. मान लो ये सन है और इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, ठीक है. ये हो जाएगा क्या, ऑर्बिटल प्लेन. उसके बाद आता है इक्वेटोरियल प्लेन. इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर से जो प्लेन जा रहा है उसको बोल देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है. यस, सो ये भी गलती है, इट्स एक्चुअली रॉन्ग. आंसर इसका है 23.5 समथिंग. अरे नहीं ऐश्वर्या मैम इज नॉट गिविंग मी थिंग्स, रखे हुए हैं यहाँ पे. दे आर सेइंग मैम इज पासिंग यू थिंग्स टू एक्सप्लेन अस. यस, ठीक है. हाँ अब सुनो, ऑप्शन 3 वेरी इंपॉर्टेंट. अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस एंड दिस टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन. ये बात सच है, राइट. ये बात तो सच है. क्यों, अर्थ जो है ना, अर्थ इज एक्चुअली टिल्टेड. मान लो ये सन है, तो अर्थ क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है. कभी पास में है सन के, कभी दूर है. इस वजह से क्या होता है, सीजन्स वेरी करते हैं, राइट. हाँ या मैम इज लाफिंग. सो ये बात तो सच है. थर्ड वाली बात इज काइंड ऑफ ट्रू. 23.5 ना, हाँ यस, थैंक यू धैर्य. बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न, जो कि रेडिश तो नहीं होता यार. मार्स होता है रेड प्लैनेट, सैटर्न थोड़ी है रेड प्लैनेट, राइट. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ओनली 3. कभी कभी वॉट एवर यू थिंक ना, यार ये सही लग रहा है, मार दो. ओलंपियाड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे, है ना, तो तुक्का मार सकते हो. ओके, यस, पूरा फॉल्स. वेरी गुड, तुक्का करेक्ट हुआ, वेरी गुड. मैं आई गेव यू परमिशन इन दिस क्वेश्चन टू हैव तुक्का, इट्स ओके. यस अदिति, यू आर राइट. बायो, हाँ बिल्कुल, बायो उसके बाद आ रहा है. चलो भाई चलो, अगला क्वेश्चन. सी इजी है, फिजिक्स क्वेश्चंस आर मोस्टली इजी. लेट्स फिनिश दिस वन आल्सो. ये भी आसान है, ज्यादा मत सोचना. अ हिंट टू यू इज डोंट ओवरथिंक, राइट. कोई नहीं, तुक्का रॉन्ग, क्या, व्हाट डिड वी लूज. चलो. 100 न्यूटन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 6L, ठीक है. इस रॉड का टोटल लेंथ है कितना, 6L, सपोर्टेड बाय टू फोर्सेस F1 एंड F2. यस वी कैन स्टार्ट द पोल. हाँ पोल स्टार्ट हो रहा है भाई, रुको जरा एक सेकेंड. F1 and F2 as shown here. Choose the condition for the rod to remain at rest. ठीक है, देखो रॉड है, टोटल लेंथ है 6L. ओके, क्या दिखा रखा है सर, एक फोर्स है F1 ऐसे, एक और फोर्स है F2 ऐसे. ऑलराइट. कंडीशन क्या होगा जिससे कि रॉड रेस्ट पे रहे. अच्छा एक और चीज, आई विल टेल यू वन थिंग व्हिच यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. ओलंपियाड के स्टार्टिंग में ना, इस पेपर के स्टार्टिंग में देयर वर सम इंस्ट्रक्शंस, उसमें लिखा था कि ओनली वन आंसर इज करेक्ट. तो आंसर क्या है ना, एक ही आंसर ठीक होगा, ये तो मान के चलो. तो ज्यादा मत सोचना. द ऑप्शन विच यू फील के नहीं यार ये तो ठीक है, उसको मार दो, ज्यादा मत सोचो. सो ओलंपियाड में आई विल टेल यू, ओलंपियाड में ना यू डोंट हैव टू ओवरथिंक. आइदर द ऑप्शंस यू फील विच आर नॉट करेक्ट उनको हटाओ और तीसरा मार दो. मेरे को आता नहीं आता बात की बात है, लेकिन मेरे को पता है ये गलत है. या फिर अनदर थिंग इज, आपको दिख जाए सही ऑप्शन क्या है, बाकी मेरे को आते नहीं आते पता नहीं, लेकिन ये तो ठीक है,
उसको मार दो, ठीक है। देयर आर टू अप्रोचेस टू सॉल्व एन एमसीक्यू क्वेश्चन एंड स्पेशली एन ओलंपियाड क्वेश्चन, ठीक है। यस, चलो भाई। ऑप्शन ए बोल रहा है F1 F2 50 न्यूटन है, ऑप्शन बी बोल रहा है F1 प्लस F2 100 न्यूटन है, ओके। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है F1 माइनस F2 100 न्यूटन है, ऑप्शन डी बोल रहा है F1 बाई F2 इज 3। आई विल गिव यू 10 मोर सेकेंड, चलो ठीक है। यस, चलो ठीक है, ऑल राइट। 5 4 3 2 1, लेट्स एंड द पोल। देखो, अगर इफ यू फील ना कि सर टाइम कम दे रहे हैं आप, ओलंपियाड में टाइम कम ही रहता है, राइट। ऑप्शन बी इज 53%। हाँ, चैट में आई एम टेलिंग यू, ऑल ऑफ यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर्स टू मिसलीड अदर्स, आई नो दैट। ये तो इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रेटेजी। टुडे टारगेट इज 200 लाइक्स, आयशा। यस, 200 लाइक्स तो होने चाहिए यार, है ना भाई, 1.5 घंटे से हो गया ऊपर। ऑलराइट, चलो भाई सुनो ध्यान से। आई टेल यू व्हाट यू माइट हैव डन विच इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो, रॉड का वेट है 100 न्यूटन। अगर मान लो मेरे फोन का वेट है 100 न्यूटन, मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ कि ये फोन रेस्ट पे रहे? जल्दी बताओ, मेरे को कितना फोर्स लगाना है? 100 न्यूटन नीचे है, मैं कितना फोर्स लगाऊं कम से कम कि ये फोन रेस्ट पे रहे? यस, 100 न्यूटन, है ना भाई। जब फोर्स बराबर होगा तब तो हम बोलेंगे नेट फोर्स 0, है ना। यस, थैंक यू, इट्स राइट, है ना। ऑलमोस्ट 125 हो गए। अरे अच्छा, 75 कम है अभी भी, ओके। 75 तो ऐश्वर्या मैम को दे दोगे आप। हेलो मा, राइट, नाइस, हाँ, वेरी गुड। सो F1 F2 मिला के 100 न्यूटन तो होना बहुत जरूरी है, दैट इज द इजीएस्ट अप्रोच। उसके अलावा लोग क्या करते हैं, सर अगर रोटेशन हो गया तो? फॉर रोटेशन आई टेल यू व्हाट वी वुड हैव डन, जो कि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। टोटल लेंथ इज 6L, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे बैलेंस करते हैं, नेट रोटेशन दिस साइड, नेट रोटेशन दिस साइड। कई बार लोग, स्मार्ट लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, सर ये L है मतलब ये हो गया 2L, ये 2L है मतलब ये हो गया L, यानी कि F1 इंटू 2L इक्वल्स F2 इंटू L। ऐसे भी करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। दिस विल नॉट गिव यू अ वेरी कंक्लूसिव आंसर, राइट। सो द आंसर वुड बी F1 प्लस F2 इक्वल्स 100 न्यूटन। ये F1 बाई F2 इक्वल्स 3 आ रहा था। वेरी गुड, हेलो, इट्स ओके इफ यू आर लेट, कोई बात नहीं, करेक्ट है ना। सो ऑप्शन बी वॉज द इजिएस्ट ऑप्शन। भाई 100 न्यूटन नीचे लग रहा है, इसको रोकना है, रेस्ट पे लाना है। कितना लगाएंगे? 100 न्यूटन, सिंपल, राइट। वेरी गुड, यस यस बिलो, यू राइट, है ना। इजी क्वेश्चन था ना भाई, जल्दी बताओ। आसान था ना क्वेश्चन, कुछ दिक्कत थी इसमें? नहीं समझ में आया? देखो सुनो, कुजू इफ आई कॉल यू, राइट, इफ यू हैव अ वेट, तुम पे अगर 1 किलो का वेट है ना, मान लेते हैं, लेट्स से यू हैव 100 न्यूटन, एग्जांपल लो, चलो 100 न्यूटन का वेट है। यू वांट दिस वेट टू बी एट रेस्ट, मतलब इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। सर नेट फोर्स, इसका वेट लग रहा है नीचे 100 न्यूटन, ऊपर मैं कितना फोर्स लगाऊं? सर 100 न्यूटन, यानी कि इन दिस केस 100 न्यूटन वाज द वेट ऑफ द रॉड। To balance the rod or to bring it at a stop or rest, you have to apply 100 Newton in the upward direction. मतलब F1 plus F2 कितना होना चाहिए? 100 तो होना ही चाहिए भाई। That's why, right? It was an easy question. अरे वाह, हरसिमरन घर तो लेट होगा आज थोड़ा, उसके बाद मेरे को एक और काम है। अदिति बैक बेंचर हुआ करता था वैसे मैं। Yes, come on. अगला क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है भाई, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और ये हम सबको पता है। चलो, इट्स अ असर्शन रीजन और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन एंड वी ऑल नो इसका ड्रिल क्या होता है, राइट। हे स्टडी ऑन, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी। रेडिएशन तो यू नो काइंड ऑफ पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा, आर्यन इज आस्किंग, ओके, कम ऑन, आर्यन आस्किंग F1 F2 इक्वल्स 50 पता है क्यों नहीं होगा? आई टेल यू, सुनो ध्यान से सुनो।
ये वाला सेंटर से दूर था, ये वाला ये गिरने वाला है, पता है क्या, ये वाला सेंटर से पास था। तो पता है क्या हो रहा है, ये दूर है ये पास है, इसका मतलब ये रोटेट हो जाएगा, है ना। अगर दोनों इक्वल कर रहे हो मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे भी होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई। सो आर्यन इट वाज अ गुड डाउट। चलो भाई चलो, लेट्स स्टार्ट द पोल फॉर दिस। टिल्ट हो जाता है, यस यू आर राइट शकुंतला। अरे तुम भी बन जाओगे, डोंट वरी। बैक बेंचर स्कूल में थे, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करी हमने, यस। कम ऑन। स्टेटमेंट 1 पता क्या बोल रहा है, लिसन टू मी। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग heat of the sun reaches the earth by the process of radiation. Okay, all right. I'm resisting very hard to not give you a hint actually. Statement 2 is in process of transfer of heat by radiation a material medium is must. ये पता बहुत easy question है, it's a very easy question, मतलब these are all the basics of heat, है ना। और हमने सेशन किया हुआ है हीट का, पता होगा, राइट, करेक्ट। वी हैव डन अ लॉट ऑफ सेशन ऑन हीट 6, 7, 8 चैनल पे। चलो आई विल गिव यू 10 मोर सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये लट्टू हाथ पे घूमता पता है, देखो, 3, 2, 1 and yes, let's stop the poll. चलो भाई देखें क्या बोलती है जनता। C is 61%. चॉकलेट प्रॉब्लम, अरे वाह, इट्स अ नाइस वर्ड, चॉकलेट प्रॉब्लम। देखो भाई ये तो हमको पता है, क्या अर्थ और सन बहुत दूर दूर है, राइट, है ना। डाटा ओवर लगता भाई का चुराना पड़ेगा, हाँ करो। वेरी गुड, नाइस सुभाश्री। भाई अर्थ एंड सन आर वेरी फार, इन बिटवीन व्हाट इज देयर, क्या है बीच में, सर वैक्यूम। अच्छा, बट स्टिल आई कैन फील द हीट, व्हाई, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। स्टेटमेंट 1 had all the information to actually prove statement 2 is false. भाई रेडिएशन को मटेरियल चाहिए क्या, नहीं चाहिए सर। अर्थ को सन की हीट तो मिल रही है, कैसे, वैक्यूम से रेडिएशन आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 ने खुद ही बोल दिया भाई स्टेटमेंट 2 आप तो गलत हो, राइट। दैट्स व्हाई does not require a medium, radiation does not require a medium, and that's why option C is the correct answer, right? है ना, easy question, candy problem, very good। चलो भाई अगला वाला क्वेश्चन तो और इजी है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या ही है इसमें, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड वी हैव लर्नड अ ट्रिक बेसिकली, राइट। A negatively charged rod is brought near two charged sphere x and y as shown here. देखो भाई प्लेट तो है नेगेटिव चार्ज, अब स्फीयर पे कौन सा चार्ज है बताना है हमको, लेकिन लुकिंग एट द पिक्चर। लेट्स स्टार्ट द पोल। है ना, दिस इज इजी ओनली। भाई बेसिक्स ऑफ चार्ज, थिंक अबाउट बेसिक्स ऑफ चार्ज, क्या पता है हमको, है ना। हम जब पहली बार चार्ज पढ़ते हैं हम एक चीज तो जरूर पढ़ते हैं, ये उसी से है क्वेश्चन। लेकिन एक चीज बताऊं, इफ आई टेल यू द ट्रूथ नो, आफ्टर लुकिंग टुडेज पेपर आई वुड से कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा, सर क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं आते हैं, आप सही बोल रहे थे, राइट, लग रहा है ऐसा, क्या लगता है भाई। पहला वाला जो रॉड है मान लो वो वाला, है ना, उसके अंदर शीट है नेगेटिवली चार्ज, जो स्फीयर है ना वो शीट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बी में क्या है, शीट है नेगेटिव चार्ज, जो स्फीयर है वो शीट से दूर जा रहा है। इतना हिंट काफी है, इससे आगे मैंने कुछ बोल दिया तो मैं आंसर दे दूंगा। चलो भाई लेट्स गिव यू 10 मोर सेकेंड्स, है ना। 10, 9, 8, लट्टू घुमाते हैं, जब लट्टू रुक गया तो पोल रोक देंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो भाई लेट्स एंड द पोल। यस कम ऑन, इजी है यार, पूछा हुआ है। आई कांट सी द रिजल्ट, कैन वी मूव अप इन द चैट थोड़ा सा। अच्छा डिनर करते हुए देख रहे हो आप, या अरे एक्चुअली you will get to know why I'm playing. B is 76%. अरे nice, very good.
थैंक यू आई कैन सी द नंबर्स. यस, लेट्स मूव द चैट डाउन. हाँ, वेरी गुड. हमने क्या पोयम याद किया है ना, एक पोयम टाइप का हमने याद किया है. क्या? लाइक चार्जेस डोंट लाइक ईच अदर. लाइक चार्जेस क्या बोलते हैं एक दूसरे को? हट भाई, दूर मेरे पास नहीं आना, ठीक है, यू आर लाइक चार्ज. अनलाइक चार्ज क्या बोलते हैं एक दूसरे को? अरे वाह मेरा भाई, ऐसे करके, राइट. अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर, लाइक चार्जेस डोंट लाइक ईच अदर. सिंपल भाई. अगर नेगेटिव के पास कोई जा रहा है, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता. और नेगेटिव किसी को दूर फेंक रहा है, मतलब ओ नेगेटिव होगा. सिंपल, राइट. सो लाइक चार्जेस, दिस इज सपोज टू बी पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सिंपल. क्या है इसमें, राइट. लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट. इतनी सी कहानी थी. ऑप्शन बी सही आना था, राइट. चलो भाई, एक और क्वेश्चन फटाफट. ये काफी रिलेटेबल क्वेश्चन है. बेसिक्स ऑफ प्लेन मिरर. बड़ा आया लाइक नाइस. बड़ा आया लाइक चार्ज. हट यहां से. यस, है ना. कॉन्फिडेंस आ रहा है. ओलंपियाड डिफिकल्ट नहीं है यार. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट. वी जस्ट थिंक सर कितना भारी नाम है, नेशनल साइंस ओलंपियाड. नेशनल वर्ड जुड़ गया मतलब इतना भारी नहीं होता. वी जस्ट क्रिएट दैट हाइप इन आवर माइंड. चलो भाई, दिस क्वेश्चन वेरी रिलेटेबल. जिन लोग चश्मिश हैं उनको पता ही होगा क्या करते हैं इसके अंदर. चलो भाई. यस, चलो लेट्स स्टार्ट द पोल. कम ऑन. Why do like charge repel and unlike charge attract? It's a good question, but you know what? We observed that there are two charges which repel each other. We had to give them some name. ऐसा थोड़ी है कि उस चार्ज का नाम बचपन से पॉजिटिव या नेगेटिव था. हमने दिया है. क्यों? क्योंकि हमने देखा उसको. हमने देखा दो सेम चार्ज को एक दूसरे को धक्का देते हुए, एंड दो अलग चार्जेस को हमने पास आते हुए. बहुत एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, एंड देन वी अंडरस्टूड कि यार इसको नाम देते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ये इनका नाम हो जाएगा आज से, है ना. दिस इज हाउ दे बिहेव, राइट. सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. और कौन है बेसिक्स? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज सबसे छोटा वाला, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज सबसे छोटा वाला, राइट. इजी, राइट. चलो, ऑप्टिशियन चार्ट is placed 30 centimeters behind a patient and a plane mirror is 170 centimeters in front of him. रफ डायग्राम बना लेना भाई. प्लीज मेक अ रफ डायग्राम इन दिस क्वेश्चन. यू विल गेट द आंसर लाइक दिस. इफ यू डू इट मेंटली दिक्कत होगा. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पेशेंट्स आईज? इजी है क्वेश्चन, लेकिन आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ रफ डायग्राम राइट नाउ. दैट इज वाई आई एम गिविंग यू 5 more seconds, वरना मैं खत्म कर दिया था इसको अब तक. यस, कम ऑन, मेक अ रफ डायग्राम. फटाफट देखो बेसिक्स ऑफ प्लेन मिरर और जल्दी आंसर कर दो. चलो, आई विल गिव यू इनफ टाइम. आई विल गिव यू इनफ टाइम दैट दिस टॉप विल स्टॉप इटसेल्फ. चलो ठीक है, ऐसे जब ये रुकेगा पोल खत्म हो जाएगा भाई. एंड हाथ पे जल्दी रुक जाता है ना. लेट्स एंड द पोल. लेट्स एंड द पोल. B is 43%. Nice. Yeah, this session will remain. In your session, most students. नहीं यार, मैं तो इंग्लिश में बात करता हूं. मतलब I speak in both the languages actually. अब मस्ती के मूड में जब आते हैं then we forget English. देखो ऐसा सच बात तो है हमारे साथ. Yes, come on, देखो. Why did I say that make a rough diagram? मैं बता रहा हूं तुमको. क्या बोला है? ऑप्टिशियन चार्ट जो है ना, तुम्हारे 30 सेंटीमीटर पीछे है. ये रहे तुम, दिस इज यू, है ना. बिहाइंड यू 30 सेंटीमीटर इज द चार्ट. ओके सर. एंड प्लेन मिरर इज 170 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ यू. यानी कि फ्रॉम यू 170 सेंटीमीटर इज द प्लेन मिरर. ओके. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पेशेंट्स आईज? किसका इमेज? अपना नन्ना चार्ट का, राइट. प्लेन मिरर क्या बोलता है? प्लेन मिरर सेज object distance in front of mirror is equal to image distance inside the mirror. सोचो, chart is how much in front of the mirror? Sir, chart is what? 30 plus 170, total is 200. मतलब 200 is the chart's distance in front of mirror. Image कितना दूर होगा? 200. Yes, हाँ, ये एलेक्स है भाई. देखो हमारे यहाँ ज्यादा बच्चे नहीं है, हमको जहां जरूरत पड़ती है इसको बुला लेते हैं. He is the hero of all the sessions, right? अंदर कितना इमेज बनेगा? 200. राइट. सो इनसाइड इट विल बी 200. अब देखो मेरे ऊपर आएगा ये सब कुछ. मैं दिखा रहा हूं तुमको ऐसे. इट विल बी व्हाट? 200, राइट. अब सोचो, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पेशेंट्स आईज. पेशेंट कौन है? एलेक्स. एलेक्स से इमेज कितना दूर है? सर, दिस 170 प्लस दिस 200. 200 प्लस 170 आंसर हुआ ना भाई. ये हो गया कितना? 170. इमेज हो गया कितना? 200.
टोटल कितना हो गया 370, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, राइट है ना। एंजॉयिंग दिस सेशन, वेरी गुड बच्चे, एंजॉय करो, लाइक वाइक कर देना यार प्लीज, है ना, वेरी गुड, नाइस, इजी है। देखो इमेज बनाओ चार्ट का और देखो किससे पूछा हुआ है, एलेक्स से। एलेक्स कितना दूर था 170, इमेज कितना दूर है 200, 200 प्लस 170 कितना हो गया 370, 370, राइट, वेरी गुड, गॉट करेक्ट यार, वेरी गुड। Oh yes, I think this is the last question. I don't know. I'm just guessing. Why a horse need to pull harder during the first few steps in pulling the cart? ये फ्रिक्शन है, क्लास 8th वालों, ये तो कर सकते हो यार तुम लोग। Yes, image to image किया था, हाँ, so that's why. Hello Aisha. In every session he is your friend. Yeah, I know. Alex ही क्यों? यार इतने बच्चे कहाँ से लाएं फिर हम, है ना? So Alex is our own innovation. Hello. चलो भाई, why a horse need to pull harder during the first few steps in pulling the cart? Let's start the poll for this. Easy है। नहीं यार कुजू, I can see your chat. Tamil, if you ask me every time, I give you only one answer. Yeah, Tamil तेरी याद है ना? I know few more words. I know if you want to ask if you have water, I usually go and ask Tanir ka. And I know 1 to 5, that's it. बस इतना ही मैं शो ऑफ कर सकता था, इसके आगे मैं चुप हो जाता हूं। चलो भाई देखो, इट्स अबाउट फ्रिक्शन। अंडरस्टैंड, वी हैव लर्नड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड देयर इज वन वर्ड ओवर हियर। ऑप्शन ए बोल रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक कौन सा होता है तुमको पता है? Although in CBSE this word is not there, but I have explained you in my sessions very specifically कि static, sliding, rolling कैसे change होते हैं, and I have given you these words also. Limiting friction भी मैंने बताया हुआ है और मैंने dynamic friction भी बताया हुआ है ना? Limiting friction is greater than dynamic friction. Confusion है अगर, you can eliminate things also. ठीक है? Sliding friction is less than rolling friction. No frictional force acts after the cart comes in motion. The air friction is greater during first few steps. अगर सही आंसर नहीं पता है, एलिमिनेशन का यूज करो, अब भी करो जल्दी, ठीक है? चलो भाई, मैंने टॉप उठा लिया है। अब हमको पता है जब तक टॉप घूमेगा, जब तक ये टॉप घूमेगा तब तक ये पोल रहेगा। लेट्स सी, ऑलराइट, चलो मैं टॉप घुमाता हूं जरा, 1 2 3, इसे मैंने जोर से घुमाया है एंड टॉप स्टॉप। चलो भाई, लेट्स एंड द पोल। बी पीपल आर सेइंग 44, ए 31। एक बात बताओ, बाकी सब भूल जाओ, चलो लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। लेट मी आस्क यू, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, मैक्सिमम कौन सा होता है जल्दी बताओ। लाइफ बढ़िया चल रही है यार, देख ही रहे हो। ACD एलिमिनेटेड, स्टैटिक इज द मैक्सिमम ना। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये समझाया है। पीपल हु हैव वॉच्ड द फ्रिक्शन सेशन प्रॉपरली, लिसन टू मी केयरफुली। देखो भाई, व्हेन यू पुश समथिंग एंड दैट थिंग डजंट मूव, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? अब जैसे ही बॉडी चलना चालू करती है तो फ्रिक्शन वैल्यू डिक्रीजेस थोड़ा सा, है ना? इसको बोलते हैं, अब जब बॉडी चल रही है जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यू कैन से डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है? दिस इज डायनामिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो हमको पता ही है भाई, लीस्ट होता है। मिनिमम इज द रोलिंग, मैक्सिमम इज द स्टैटिक, इसीलिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ए को एलिमिनेट नहीं करना था। अब ध्यान से सुनो, एलिमिनेशन कैसे यूज होता है, लिसन टू मी केयरफुली। यस, वेरी गुड, लिसन टू मी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, गलत। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स आफ्टर द कार्ट कम्स इन मोशन। भाई जब चल रहा है कार्ट, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है क्या? फ्रिक्शन तो लग रहा है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग।
एयर फ्रिक्शन इज ग्रेटर फर्स्ट फ्यू स्टेप। अच्छा जी, पहले फ्यू स्टेप में एयर फ्रिक्शन ज्यादा था, फिर कम हो गया। क्या बात कर रहे हो यार। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। वेरी गुड गुनगुन, है ना, वेरी गुड, है ना। लर्नड टू न्यू थिंग्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है क्या? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, यू कैन कॉल इट स्लाइडिंग, डायनामिक, काइनेटिक, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। यस, वेरी गुड बिल्वा। चलो भाई चलो, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से फिजिक्स का। आसान है यार ये तो बहुत। दीज आर द बेसिक्स ऑफ लेंसेज। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भी नहीं है, चलो ठीक है। Oh, one more, huh? Yeah. Avika, you will get the notification very soon. Let's see. Let's start the poll for this question. Two parallel rays of light as shown in the figure pass through two boxes. अब हमको नहीं पता बॉक्स में क्या है. Devices used in boxes 1 and 2 are respectively what? है ना? Right? देखो 6, 7 years वालों, 9, 10 के पता है बच्चे 3-3 घंटे का सेशन करते हैं. कमान यार, तुम लोग तो कर ही सकते हो इतने. Come on. Two parallel rays of light as shown in the figure pass through two boxes. दो बॉक्स में क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को रेज दिख रही हैं. आई कैन सी द रेज, है ना. स्टार्टिंग रेज पैरेलल थी. डिवाइसेस यूज्ड इन बॉक्सेस 1 and 2 आर रेस्पेक्टिवली व्हाट? क्या लगता है पहले बॉक्स में क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है. कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है, या फिर कॉनकेव लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है. क्वेश्चन इजी है, बेसिक्स ऑफ लाइट, है ना. ये पढ़ते ही पढ़ते हैं हम जब भी ये चीजें पढ़ते हैं. चलो भाई, टॉप उठा लिया मैंने. लेट्स रोटेट द टॉप एंड सी व्हेन डू वी एंड द पोल. ठीक है भाई, 1 2 3. लेट्स सी. एंड टॉप तो रुक गया. चलो भाई, लेट्स एंड द पोल. इजी है ना, ये क्वेश्चन इजी है मेरे को लगता है. ज्यादातर बच्चों को इजी लग रहा होगा. ऑप्शन ए 45, ऑप्शन डी 28, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज 45. सुनो जरा, आई विल एक्सप्लेन ऑप्शन ए फर्स्ट. कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? पहले मेरे को ये बताओ. टुडे आई हैव मेनी टॉयज. या आई हैव दिस ऑल्सो. And I have top also. नहीं, convex. Convex is a converging lens. Convex lens पता है कैसा होता है? लाइट आती है, उसको कन्वर्ज कर देता है. कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है ये. सुनो जरा, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस. लाइट रे कम्स एंड इट कन्वर्जेस, ऐसे. कॉनकेव लेंस कैसा होता है? ऐसा. लाइट रे कम्स एंड इट डाइवर्जेस. अब ये बताओ, इसको देखने के बाद क्या लगता है, क्या आंसर होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसको देखने के बाद क्या लगता है? व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए जितने लोग बोल रहे हैं, हाँ ऑप्शन डी होगा ना. नहीं, मैम वो सिटिंग है. यस, है ना. देखो, इट्स गोइंग टू बी पैरेलल रेज आई हैं. दिस इज व्हाट? डाइवर्ज्ड. दिस इज व्हाट? कन्वर्ज्ड. भाई डाइवर्ज कौन करेगा सर? कॉनकेव लेंस करेगा. कन्वर्ज कौन करेगा सर? कॉन्वेक्स लेंस करेगा. मतलब कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. इजी. चलो भाई, ये है. हेलो क्राफ्ट बर्गर, माय नेम इज सौरभ. यस, if I haven't introduced myself, my name is सौरभ and we deal a lot in physics. हम लोग फिजिक्स की बहुत बातें करते हैं. डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर्स. देखो, लेंस का काम क्या है ना, लेंस अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम टू द नेक्स्ट साइड, है ना. मिरर्स दे रिफ्लेक्ट बैक. यू गॉट कंफ्यूज? इट्स ओके, इट्स ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो भाई, दिस इज इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. ओके, अगर तुमको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, दिक्कत होगा थोड़ा सा. लेट्स स्टार्ट द पोल. Yeah, let's start the poll. Come on. Why can't it be C? Just a second. हाँ, okay. Question है सामने. I'm telling you. Last question में C क्यों नहीं था? Mirror पता है क्या करता है? If it was concave mirror, it will send the light backwards ना. लेकिन क्या हुआ?
उस बॉक्स से लाइट एंटर्ड एंड वेंट ऑन द अदर साइड। ये तो केवल लेंस कर सकता है, मतलब मिरर तो दोनों केस में हो ही नहीं सकता कहीं भी, दैट्स व्हाई। ठीक है, देखो इसका क्या है ना, एक बेसिक फॉर्मूला है, गूगल कर रहे हो तो पता नहीं, बट ये है कि इट्स अ बेसिक फॉर्मूला एंड इफ यू नो दैट दिस विल बी इजी, अदरवाइज तुक्का मोस्टली। चलो फॉर दिस आई विल गिव यू 10 मोर सेकेंड्स। ठीक है, 10 9 8 7 6 4 3 2 1 and टाइम अप। ऑप्शन सी आया 33%, ऑप्शन बी आया 31%, ऐसा है क्या? ओ ओके, एक बार फिर। यस यस, नाइस। यस यू आर राइट, लर्न विद जिक्रा। या पोल एंडेड, अरे यार छोटा था, infinite option is not there, नहीं, the infinite option is not required, no. Listen to me, देखो in such cases, सुनो जरा everyone, if you know the formula very good, if you don't know listen to me carefully. You do 360 by theta. Sir, what is theta? Theta is the angle between these two mirrors, है ना? in such cases क्या हो सकता है, ऐसे आएगा क्वेश्चन कि एंगल है कितना 90 डिग्री, ऐसे आएगा क्वेश्चन एंगल है कितना 120 डिग्री, तो मिरर के बीच में जो एंगल है ना 360 बाई थीटा करो। ठीक है, 360 बाई थीटा करो, चेक करो ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में हमेशा ये चीज इवन आएगी, आई एम टेलिंग यू ज्यादातर, लेकिन अगर ऑड है और इवन है, सुनो जरा 20 है, 360 बाई 20 कितना आता है सर 18। अगर इवन आया, सुनो जरा ध्यान से, इवन आया तो हमेशा -1 करना है, यानी कि 18 माइनस 1 इक्वल्स 17। ऑड आ गया बाय चांस, इफ इट कम्स ऑड, ठीक है, इफ इट कम्स ऑड लिसन टू मी, यानी कि -1 नहीं करना है, 360 बाय थीटा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गेटिंग इट, नाइस। हाँ, क्वेश्चन शकुंतला, व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर आर टू मिरर्स लाइक दिस, इन बिटवीन देयर इज एन पॉइंट O केप्ट। पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर। एक बार ना यू कैन टेस्ट दिस ऑल्सो, तुम्हारे घर में मिरर हो ना, इफ यू हैव 2 मिरर्स लेट्स से, दोनों मिरर को ऐसे रखना अपने सामने और देखना कितना इमेज आ रहा है, बहुत सारा इमेज आने लगता है। समझ आ गया? ओके, ओ थैंक यू खालिद ना, यस। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूं यहां पे बहुत जरूर, प्रूफ आर्यन यार, आई कैन प्रूव इट, लेकिन मेरे को टाइम लगेगा। ये 11-12 वालों को पढ़ाया करते हैं हम लोग कि सारी की सारी इमेजेस एक सर्कल पे आती हैं। मैं रे डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन अभी क्या बहुत टाइम लग जाएगा, तो आज ये फॉर्मूला सीखो। ठीक है, डोंट वरी, अगर दिक्कत होती है बाद में किसी दिन अच्छे से बताऊंगा ये। I only see 143 या कंफ्यूज। ठीक है, सुनो सुनो, लिसन टू मी, व्हाट डिड आई से? In such questions where there are mirrors at an angle and the number of images is asked, पता है क्या करना है? Do 360 degrees by theta. Theta is in degrees, right? Okay, sir. 360 by theta. If the answer comes out to be even, say -1. For example, here the answer was how much? 18. 18 is an even number. -1 is 17. If let's say the answer comes out to be odd number, है ना भाई? If the answer comes out to be odd number, ठीक है? अब डेसिमल आएगा, उस पर बात नहीं करूंगा मैं अभी। जैसे 120 डिग्रीज अगर होगा थीटा, तो कितना आएगा? 120 इंटू 3 इज 360, 3 आ जाएगा, वहां पे -1 नहीं करना, राइट? सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है आज। यस कृष्णेंदु, स्टिल लाइव। थक गए ना? आई नो। देखो इसके बाद थोड़ा सा बायो बचा है बस। ऑलमोस्ट डन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये आसान क्वेश्चन है। You can come. This is the last question. I come 1 minute. You take. Yes. Do more questions ना। हाँ, अब देखो बच्चे कह रहे हैं और क्वेश्चन करने हैं। Physics or bio? What is it?
बायो के लिए थोड़ा एक्साइटमेंट बचा के रखना भाई, मैम रुकी हुई है यार अभी, तुम समझ रहे हो, थोड़ा नहीं काफी, बहुत अच्छे। डिनर टाइम, यस सीना, डिनर टाइम, आई नो। चलो गाइस कम ऑन, अब पोल आ चुका है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, बहुत ही आसान और छोटा। रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सुनो जरा, पूरी कहानी है, मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी। द साउंड रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द सोर्स आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑप्टिकल लाइक वॉल। भाई साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है किससे? दीवार से, पहाड़ से, इज कॉल्ड एन एको। क्वेश्चन तुमको बता रहा है पहले तो एको क्या होता है। भाई हमको पता है यार, क्यों बता रहे हो? सुनो जरा। अ क्रैकर इज फायर्ड बाय अ चाइल्ड। दिवाली आ रही है ना? हाँ। द चाइल्ड हियर्स एन एको फ्रॉम अ क्लिफ 3 seconds आफ्टर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ क्रैकर। क्रैकर फटा, बूम। 1 2 3 सेकंड बाद आवाज आई, बूम। समझ रहे हो? क्रैकर की आवाज एक बार तो अभी फटा, उसके बाद 3 सेकंड बाद आवाज आई फिर से बूम। एको आने में लगा 3 सेकंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन टू यू 344 मीटर पर सेकंड। क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्स्टिकल फॉर एको टू बी हर्ड। वैसे तो इसका बहुत डायरेक्ट आंसर होता है। लेट्स एंड द पोल गाइस, कम ऑन, लेट्स एंड द पोल नाउ। ये तो मैं भूल ही, आसान क्वेश्चन है तो पोल। Actually, this has a very direct answer, but you can actually. B is 41%. C is 32%. सुनो जरा, my question to you is, echo के लिए दो साउंड के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मेरे को ये बता दो बस। Someone, if you tell me, how much gap should be there between two sounds for the echo to be heard? कितना होना चाहिए? Anyone? आंसर बताओ, कितना टाइम होना चाहिए? दो साउंड के बीच में कितना ड्यूरेशन का गैप होना चाहिए कि हमको एको सुनाई दे? नहीं, यू आर टेलिंग मी डिस्टेंस, आई एम आस्किंग यू टाइम। बिटवीन 0.5, नो, कम ऑन। परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं इसको। इट्स ओके, सुनो जरा। अरे वाह, थैंक यू सिमरन। चलो भाई, परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं इसको। इसका मतलब इफ यू हियर 2 साउंड्स, देखो बहुत सारा साउंड अगर 0.1 सेकंड के अंदर आ जाएगा ना, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट। तुम्हारा दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि डिफरेंट साउंड था। 0.1 सेकंड शुड बी द मिनिमम गैप। यानी कि सोचो 0.1 सेकंड, ठीक है, 0.1 सेकंड का गैप तो चाहिए। 0.1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? सोचो सर, 344 इंटू 0.1 मतलब 34.4 मीटर्स। ओके, लेकिन 34.4 मीटर क्या है? साउंड का जाना, साउंड का आना, ठीक है, जाना और आना इक्वल डिस्टेंस, यानी कि हाफ कर दो उसको। 34.4 बाई 2 कितना होता है जी? 17.2। एंड ये कौन सा है? ये तो ऑप्शन सी है। Yes, got it. Yeah, I know. See, 6, 7, 8 people. This session is the chance for you to prove. Class 9, 10 वालों हम भी कर सकते हैं. I'm telling you. Class 9, 10. तुमको पता है class 9, 10 वाले पे? Okay, I'll tell this when ma'am will come here. I'll come now. Yeah, you come. Yes. I want to pump up the josh. Everybody is very sleepy. Yeah, you are sleepy है ना? Sleepy नहीं होना भाई. That's why they put me in the end. Yeah, we'll bring you the dynamite in the end. Yeah, I know you are waiting for biology. नहीं भाई, पहले पैराग्राफ में कोई काम नहीं था। एक बार और समझा दूं, सुनो जरा। देखो, दो साउंड के बीच में टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड, यानी कि टाइम हुआ 0.1, स्पीड हुई 34.4, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि 0.1 सेकेंड में साउंड को कवर कर रहा है कितना? 34.4 सेकेंड। अब एको कैसे होता है? साउंड जाता है और आता है, डी डिस्टेंस प्लस डी डिस्टेंस 2d। अब तुमको डी पूछा गया है, यानी कि 34.4 डिवाइड बाई 2, 17.2 इज द आंसर। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ और ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो यार, ठीक है। यस, कम ऑन, ये लास्ट क्वेश्चन कर दो बस, फिर मैम इज ऑल योर्स। Ma'am will wind up soon. Yes, Black Panther, I know.
सर लास्ट बोल अरे मैं खुद को लगाया, खत्म हो जाएगा। चलो भाई चलो, पता मैं क्या बोल के आया था? When I entered the session, I said 30 minutes, done. And Ankita ma'am said you will not finish. Yes. चलो इसका बता दो यार, देखो how far is the cliff? तुमको साउंड की स्पीड दी है, ठीक है? You have speed of sound. What do you have? Time taken for the sound to be heard again. कितना सेकंड लगा? 3 सेकंड। पूछा गया है कि क्लिफ कितना दूर है, राइट? साउंड गया, ट्रैवल किया d डिस्टेंस, फिर वापस आया d डिस्टेंस, पूछा गया है क्लिफ कितना दूर है। कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो भाई, लास्ट 5 सेकेंड्स ऑफ फिजिक्स। अब लट्टू वट्टू नहीं घुमाएंगे हम, बस काम खत्म करेंगे। उल्टा घुमाओ। My face was there. I didn't realize. Yeah, you can come inside. Let's see the ulta top. Ulta top goes like this. So yes, chalo bhai, let's end the poll. 3, 2, 1 and stop. %42% people say B. C is 27%. चलो भाई देख लेते हैं जरा। देखो ध्यान से, 2D कैसे आएगा? अगर मैं 344 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई करूंगा 3 सेकंड से, यानी कि आएगा क्या? 344 इंटू 3 मीटर्स। ये क्या है सर? ये है 2D। इसको अगर D निकालना हो तो मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, बस सिंपल, सॉल्व करो। 516 इज द आंसर। यस यस पीपल, इट्स टाइम फॉर बायोलॉजी। आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट काउ एंड अ मिल्क एंड, ये क्या चल रहा है? God knows. Come. ठीक है? यस, दिस इज द टाइम फॉर बायोलॉजी। आई नो न्यूमेरिकल दिमाग नहीं चल रहा। देखो भाई सुनो, आई थिंक वी जस्ट शो देम दिस थिंग फर्स्ट। देखो लाइक वाइक करते रहे ना, 200 का लाइक है हमारा टारगेट आज। एंड द रीजन वी आर टेलिंग दिस टू यू इज, क्लास 9 10th पे कैन यू गेस व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ वन सेशन? एक सेशन सबसे लंबा अब तक कितना हुआ है? कोई गेस करेगा? Anybody? Yeah, I'm here. I'll just. 4 hours. 7 hours. पता है? 5 hours. 5 hours is the maximum session time we have taken in 9 10th. उनके नॉर्मली आजकल सेशन क्या है ना, 2.5 आवर्स 3 आवर्स के हो ही रहे हैं, 4.5 आवर्स भी लिया है। सो आई एम टेलिंग यू दिस टुडे सेशन, आई नो इट्स डिफिकल्ट थोड़ा सा, लेकिन पहली बार कर रहे हैं साइंस ओलंपियाड, है ना? दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम, लेकिन आज के बाद जब भी होगा ये ऐसे होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई होल्ड ऑन, बायो आ रहा है, मेक श्योर यू ब्रिंग द एक्साइटमेंट बैक। यस, 5 आवर्स विद खुशबू मैम। चलो भाई ठीक है, लेट्स कम फॉर बायो। And yes, Thank you, Saurabh sir. And everyone, I know all of you are feeling sleepy. They're like, Mom, I'm feeling hungry, time to nap. So don't worry. All I want you to do is refresh yourself a little bit. Move your hands and legs, right? yes. You also. ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। All of you, make sure, right? You loosen up a little and just, it's biology, we'll finish it very quickly, my target. And this time, I don't want to take till 10 o'clock because I know all of you want to go to sleep also. Yeah. So another 20 minutes of your time, we'll quickly wind this up, okay? I know I was almost nodding off when I was sitting there in sir's class. All of you, I was not sleeping, I was reading. Nodding off means sleeping. No, I was nodding off a little, that's the truth, right? ठीक है, बायो, attentive. चलो भाई, bye bye. Yes. So very quickly, Saurabh sir is. Yes, very good everyone, very good. So very quickly, show me your excitement levels on the chat. Make sure that you let us know that you're enjoying this class. First time, like how Saurabh sir said, we are going to be doing a marathon for all of you, right? So please make sure that you share this with your friends and subscribe, because this is your premium channel where we are going to be helping you with your Olympiad prep, right? Yes, I know all of you are like, sir, tusi na jao, but sir already left. So guys, very quickly, let's do the biology questions, okay? Are we ready? Yes? Are we ready? Quick excitement level check on the chat and I'm going to get started, okay?
I can see all of your messages, and we have Harish sir also, who is managing the moderation. So quick shout out to Harish sir, who's been making sure that all the polls and everything is there, right? Yes, all right, amazing, amazing. Yes, okay. Alright, so let's get started. So here we have the first question, and Harish, let's get ready with the poll. Alright, so as you can see on your screen, you have a Venn diagram that is given to you. Okay, so you have 3 circles, and you know what a Venn diagram is, right? So you know that on one side it says it is used for removing weeds, and it is a chemical that is used for the process of crop production, and it is used to protect the crops from pests. Now here, as you can see, it is meeting at 2 points which we have labeled as P and Q. Now what you need to identify is what is P and Q. Okay, this is a little tricky. The first ones are little tricky, I know. You can do a tukka here, okay, because I do understand that these are all some examples of chemicals, right? They are all chemicals, but very quickly what I want you to do is tell me what is P and Q. So we're telling that this right here is a chemical which is used for crop production. What is a chemical that we use for removing weeds? Can you tell me? What is the name? Very quickly everybody. Harish, can we have the poll on the chat? Yes, all right. Yes, he's setting up the poll. Please make sure that you do wait for some time, okay? All right, everybody, you have the poll as well. Now, since the poll is there, I'm not able to see this. Very good. P right here are weedicides, right? What about Q? It's a chemical which is used to protect the crop from pests. What do we call them? What we use to protect the crops from pests. What do we call them? Yes? All right. Okay, everyone. I'm seeing some of you are saying C, some of you are saying A. 34 votes in. Very quickly. Fertilizers or pesticides. We're talking about something which is used to protect the crop from pests or remove pests, right? So Q right here are pesticides. So what you need to identify is what is P and Q. So you have to identify examples of which is a pesticide and which is a weedicide and which is a pesticide. So now of course a lot of answers, 41 votes have come in. Very good, very good. So I'm going to give you 2 more seconds and I'm winding up the poll, okay? All right, okay. All right, so 3, 2, 1, and we'll close the polls. All right? Yes, all right, very good, very good. See, I know this is a little tough one, okay? So I do understand that little bit you don't know what is what. But the correct answer here is option A. Now, lot of you actually voted 34. There was a tie between option A and C. So very good. I can see that a lot of you did get this correctly. Yes. So we can scroll down to the chat because I think the chat is stuck right now, Harish. So we can scroll it down. Yes. So let me give you a very simple trick. You have lots of fancy names here on screen, right? But what you need to remember is gamaxane, all right? And from this, dicystone, okay? So gamaxane and dicystone are examples of pesticides, all right? While on the other hand, your butachlor, your dalapon, your metolachlor, all of them are examples of weedicides, okay? So all you need to do is remember some examples of pesticides, and weedicides you have a big huge one, but all you need to do is to figure out which is which. So Q here is a pesticide and butachlor here is an example of a weedicide. Yes, all clear. I do understand that this is a little out of syllabus. Little bit we have to depend on tukka for this, but it's okay. All right. Importance is to learn and remember. Next one is a easy peasy one, right? For those of you who are feeling sleepy, let's get energized, okay? Put some water on your face, drink some water. We'll quickly go. Yes, I'll spin the top also. This is an easy question. I'm sure that you will be able to understand this very clearly. You have an agricultural implement that is given to you on your screen, right? So this is from crop production and management. What do you need to do? You need to identify which among this is the agricultural implement, right? Which is this tool? Step number 1. Step number 2. What is the role of this particular tool? So very quickly everybody on the chat. Yes? All right.
right. Okay. All right. Very good. Very good. Image is not clear. For those of you for whom the image is not clear, please make sure that you zoom into the screen, right? Yes, I can see the answers. You are already telling me what is the tool, right? So the tool that you are seeing on your screen is nothing but, yes, very good, very good. This right here is a seed drill. So if it is the seed drill, right, what do we mean by this? Yes, what is the role of a seed drill? So now you've identified the tool. Now for the function, and I can see the votes coming in. Very good, very good. So I'm going to wind up very quickly. All right, brilliant. So let's wind up the poll in 3, 2, 1, and let's wind up the poll. Yes? Very good, everybody. Very good. So proud of all of you, right? So the correct answer here is option B, that this right here is used to sow seeds at equal distance and at proper depth. And of course, we know that the seed drill that is there is a more of a modern tool, right? And from the name itself, we know that it is used for sowing the seeds. And of course, the other options we know are not related to seed drill, so I'm not going to quite discuss them because we know this, right? Easy peasy question, no? Everyone, it also helps to remove weeds. So see, I do understand. I knew this question would also come, okay? I came prepared for this. See, the thing is, when you say seed drill, what is the primary function? So now if you look at any agricultural implement, right, you can use it for one in many functions. It's kind of like how we use tools at home. You can do multiple functions with it. But what is the primary function, right? The primary function that is there is to make sure that, you know, it is responsible for drilling the seeds and sowing the seeds at equal distance and at proper depth. So are we clear with this, everybody? Are we clear? Are we clear? Sorry. Ma'am is skipping dinner. Please eat dinner. Please have your dinner as you watch this class. I would always recommend that. Don't skip dinner. Prarthana, I want to speak in Hindi, but you do know that I am learning to be more comfortable in speaking in Hindi. But moreover, I will speak in English. Okay, I'm more comfortable in that. So very sorry. Main function, yes, very good, very good. I know nowadays electric seed drills are also coming. Ma'am, where to master crop production and management chapter? Yes, master it on our channel. Search for crop production and management in one shot by Ashwarya ma'am, right? So search for that. You will find a video that I have done. You can check that out. If you want mind map sessions, NCRT sessions, you will find everything on our channel, okay? Just go search for it on our channel. You will find it. That's my promise. And make sure that you do not forget to subscribe, yes? So please make sure that you do subscribe. I know you all talk in Hindi in Saurabh sir's class, but in mine you talk in English. Okay guys, let's move on to the next one, right? So here, as you can see, we have a box which is given to us where we need to refer to the analogy that is given and select the correct option that is regarding it, okay? So you have endemic species and Asiatic lion, and you need to identify in exotic species what is X, right? So our job is to identify X. So you have sea mink, dodo, water hyacinth, and stellar sea cow. So everybody, very quickly on the chat, we'll be having the poll running. Let's have the poll on the chat very quickly, and let's get started. See, let me explain to you this. Endemic species are nothing but those species which are there, which are found in a select geographical area. That means that if I select a certain area, I find only certain species there and nowhere else, right? Which is what we say that these species are endemic to this area. But exotic species, for those of you who need a slight help with this, right? Exotic species are nothing but those species which are, I would say, invasive, or I'll not say invasive is the right word, but I'll say they are alien, or maybe they are non-indigenous. Now, what do I mean by they are non-indigenous? That means that these species that are there are normally not found there, but due to some reason they have been brought to this particular place and now they are growing, right?
So now as you can see, the chat is visible to all of you, right? Or the poll is visible. Okay. Yes. All right. What is exotic species? I have already answered. They are non-indigenous species which are there. Yes? Okay, very good, very good. Yes. This question is from conservation chapter, right? It's from conservation in plants and animals, which we will be covering soon. Yes, I'll just be back in a minute. All right, very good. So now, of course, with this, I'm going to quickly wind up the poll, right? So let's quickly wind this up in 3, 2, 1, and let's close the poll. Yes? All right, very good, very good. I can see 55 of you have voted for option B. Okay. While I can see that around 26 have voted for option C. So in this case, if you see, right? We see that the correct answer is actually option C, that is water hyacinth. Now, if you look at sea mink, dodo, and stellar sea cow, right? These are all extinct species, right? So we see that these are all extinct species, which means that they no longer exist on our planet. But I told you that exotic species are non-indigenous species, right? So they are non-indigenous. Yes, which means that water hyacinth that is there is considered to be an exotic species. Now the thing is, it's a very interesting story. Now what happened was, water hyacinth was not normally found, okay? Like they took this water hyacinth from somewhere else and it was found growing on some pond, and eventually if you see, the population of water hyacinth started to grow considerably in the pond. And as a matter of fact, we used to call it as terror of Bengal. So if you actually search for it, you will find this terror of Bengal. Yes? Exotic has two words. Exotic means fancy, but in biology, exotic also means non-indigenous. Okay? Alright, dodo has vanished. It's a kind of bird. Dodo is a kind of bird. Yes? Lantana camara is also an example. Very good, Trupti. Very, very good. Yes? Alright. Brilliant, everybody. Brilliant. Yes. Okay. Quickly now, we'll move on to the next one that is there. So this will take some time for all of you. I want you to take your time and solve it. Alright? Don't worry. Take your time with this question, and later on also, see, now if you're not able to solve it, because I do understand we had long classes, it's okay. Come back and watch it and try to solve it properly, in case if you're not able to do it right now properly. Alright? So I will recommend that, because I also understand a little bit you will also be feeling tired, right? So don't worry. Yes? So as you can see on your screen, we have statements given to us. We have 4 statements. And what we need to do is to select the option that correctly states them as true and false. So as you can see, you have P, Q, R and S. 4 statements that are there. You need to figure out which among them are true or false, true or false. You need to identify. Once you do this, all you need to do is to figure out the correct answer. Yes? Very quickly on the chat, can we have the poll running? Yes, all right everybody, very good. Poll is also there. You can answer to me on the polls, right? In the meanwhile, as you are answering it, you can take a screenshot of this. I'll solve it with you in the meanwhile, okay? Yes, 14 votes are in. Very good, very good. Okay, all right. You are very energetic. I know. When I'm with you guys, it's like energy from somewhere and all will just come, because I just love being with all of you. And you know that. No, please don't say that, Krishnendu. Not like that. I just want to make sure that you are taking care of yourself, right? That's important. Yes. Oh, nothing like that, Judd brothers. Nothing like that. I probably would have missed your comment, right? Because when the poll is there, I cannot see the chat. Yes. Oh, please don't say that. Yes. Are we clear? So quickly, if you look at this, we see here that fungi are non-green saprophytic plants that can reproduce only by asexual method. Now, when we talk about reproduction in fungi, most often than not, we know that it happens by an asexual method, which is spore formation, right?
So this is how it happens most often than not. But at times we also see that it happens through sexual methods, okay? And we learn more about it when we cover reproduction in plants chapter, okay? Now the next one says algae, which means that P, Q, R, okay, let me just write that properly, P, Q, R and S, right? So in this case we see that P here is false because it's not only asexual, but it's also sexual method at times and in some organisms, okay? Now on the other hand, when we look at algae, they're saying algae is always multicellular and they live in colonies. That's not true, no? We have some algae which are unicellular. And very quickly, can you give me on the chat some examples of unicellular algae? Can you tell me what are some examples of unicellular algae in the chat? I have told this to you when we were discussing microorganisms as well, no? Yes, all right, very good. So this statement here is also false. Now on the other hand, I can see somebody is telling me, ma'am, blue-green algae. Blue-green algae, it's filamentous, yes, all right, very good, very good. Hydra, no, not hydra. Cyanobacteria, yeast is not algae. What about chlamydomonas? We learnt about chlamydomonas, right? Yes, all right, very good, very good. Very good. I can see Adrika has sent me the answer. Yes, wonderful. Amoeba is not an algae. Amoeba is a protozoan. Okay. Volvox. Yes, very good. Very good. Now we have comma-shaped bacteria called Vibrio that causes common cold. Now we know we have Vibrio which is comma-shaped. But does a bacteria cause common cold or does virus cause common cold? Can you tell me in the chat? Harish, we can close the poll. We can close this poll for this particular question. Yes, very good, very good. Yes, wonderful. Viruses, right? So we have rhinovirus which causes common cold. So in this case, we see R is also false. Leaving us with the last one which says tetracycline, erythromycin, streptomycin are antibiotics which are made from bacteria and fungi. So we know antibiotics are manufactured by these bacteria and fungi, right? So this right here is true. So what do we need to do? We need to figure out which has the combination and how, like most of you have got the answer. The correct answer here is option C. That is FFF and T, right? Very simple and easy. Yes? All right. Now let's move on to the next one, okay? Now as you can see, we have a flowchart which is given to us on top. So you have W, X and Y. And all of them are some events that will cause loss of biodiversity, right? So there are some events which are taking place which will cause loss of biodiversity. Now what you need to do is to figure out from these four options, right? What is the correct match of W, X and Y? Yes? This one is easy and it is interesting. So what do we mean by biodiversity? Because I know I have not taken this chapter, so you guys might be a little, if in case you don't know what it is, I will tell you once, okay? Biodiversity that is there is nothing but the variety of living organisms that we find on our planet. Now we're saying that there is some loss of biodiversity that is happening. So what do I mean by loss of biodiversity? That means that living organisms are no longer there. So what would cause the less number of living organisms? What would affect them? Yes, very good, very good. It includes your flora and fauna. Very good, Lata. So I know I didn't run the poll, but still you all answered, so I'm just going to go with it, right? So we know that there are multiple factors as to why loss of biodiversity can take place. First and most prominent one. You can give the answer in the poll as well. Thank you, Harish. Thank you so much. So first and prominent reason for loss of biodiversity is deforestation. So deforestation is nothing but removal of forest cover, right? And we see that when there is removal of forest cover, we know that forests are home to various organisms, right? And if you cut all those forests, their homes will be lost. So first and foremost, W here is deforestation. Now apart from that, we also see introduction of exotic species. We have just discussed about exotic species, right? Like for example, the Lantana camara that was there, and we also discussed about water hyacinth, right? So these are all some examples which are there. And when they get introduced, they take over the home of these organisms, right? They start to grow excess in number.
So this also affects negatively on biodiversity. And last but not the least, pollution also affects it. Now in the other options, we see that there are some positive impacts, right, which don't really cause loss of biodiversity. For example, creating protected spaces, afforestation, in situ conservation. These are all steps to conserve biodiversity, which is why, like how all of you have told me, the correct answer is option C. So Harish, we can wind up the poll right now. Okay. Introduction to exotic species is when, you introduce these organisms and, they start to take over the natural habitat. This is easy. No, all of you so far, all good, easy peasy? Yes? All right, very quickly, very quickly. Yes, that's amazing. We hit almost 170 likes. That's awesome. Now we need to keep increasing this number, no? Yes, very good. So cutting of trees is what we call as deforestation. So what causes loss of biodiversity? When we cut forest cover, which is habitat to these organisms, introduction of exotic species, right? So when some non-indigenous organisms or alien organisms, when they come and they are in a particular habitat, they encroach the biodiversity, and of course pollution, right? So Indian siblings, I hope now that the answer is clear. Quickly moving on to the next one. Yes, so this is a very interesting question from cell chapter, and I'm sure you will enjoy doing this question. Yes. All right, no problem, Krishnendu, no problem. You can go and come back, okay? All right, in case, but I hope that I wind up by then. I want to wind up in the next 10 minutes, yes? So as you can see, you need to identify W, X and Y. That means, in this case, sorry. You need to identify X, Y and Z, okay? And what you need to do is to figure out which among the following is the incorrect option. So, first and foremost, solve the flow chart. Yes? Solve the flow chart that is here with us. So first and foremost, solve this and then figure this out and give me the answer in the poll. I can see 6 votes are there. Yes, all right. Okay. Very quickly. 8 votes coming in. Let me quickly refresh my screen. Is this an easy one? This is a very simple, no? Very simple and easy question. I'll quickly explain it once you do it. Ma'am, 6th class ki live kab hogi? Okay, we'll be doing it soon, don't worry. Nahi aaya mujhe samajh. Okay, Black Panther, which question did you have a doubt in? Please let me know. Yes, I know, it's okay, Harsimran. I'm with you guys, no? So it's fine. But I don't want you all to be sleeping. I don't know, oh ma'am, 10 o'clock, time to sleep. No, so it shouldn't be like that. Okay, all right, 27 votes and I think we can wind up now. Yes? All right. Okay. So I think, Harish, we can close the polls. Yes? Okay, I can see that 38 of you have answered B, option B, while 29 of you have answered C. Okay then, this is slightly tricky. So let's see how you've solved this part, okay? See, cell with a well-defined, right? So cell has a well-defined nucleus, yes or no? If cell does not have a well-defined nucleus, then what is it? This right here is called as a prokaryotic cell, right? So X right here is a prokaryotic cell. Now, if it is present, then these two are your eukaryotic cells, okay? So these two are your eukaryotic cells. Now, if not, then Y here, if cell wall is present. If no, Y here is your plant cell, while Z here is your animal cell. Yes? So now you have identified what is X, Y and Z. Statement 1. Membrane-bound cell organelles are absent in X. Yes, this right here is correct because you need to figure out what is incorrect, no? So this right here is correct. Plastids are absent in Y. No, right? This is also, plastids are absent in Y. Yes, this statement is, I'm sorry, I have written this ulta-pulta, okay? Y here is, I'm also a little sleepy, right? Probably because of that. If no, this is animal cell, okay? Sorry.
This is animal cell and this is plant cell. Okay, I read it the other way around. So in this case, plastids are absent in Y. Yes, the statement is correct. No, this right here is absolutely correct because we do not find plastids in animal cells. We will find it only in plant cells. Yes? Okay. Now, next one is centrosomes and centrioles are usually absent in Z. This is also correct because we normally don't find centrosomes or centrioles in the case of plant cells. Leaving us with the last one, which says lysosomes are more in number in Z when compared to Y. Now, this statement is incorrect because we find more number of lysosomes in animals when compared to plants, right? So, I hope now that we are clear with this. Yes? Are we clear for those of you who are confused with this? Because I saw that a lot of you had given me the answer as option B. No? Yes. Are we clear? Very quickly, everybody. Now, some of you asked me, ma'am, how many questions? I'm going to quickly scroll and check. I think we have, yeah, we have quite a few. We'll do quickly, okay, from now. Jaldi, jaldi we'll do. Yes? Okay. Now, let's move to the next one. Yes, very quickly. Now you have 4 statements which are given to you from which you need to fill in the blanks and then figure out which is the correct answer. Yes? So very quickly everybody do it with me. Okay? So you have 4 statements which are given to you at this point. Your poll is also on the screen. Yes? So let me quickly have a check on what you are telling me in the chat. First one. Dash is a semi-autonomous organelle which is absent in RBC. So which organelle is absent in RBC? Actually, if you get this one correctly, no, the rest of the answer becomes very easy. This is all you need to get it right, okay? The first one is all that you need to get right. I'm telling you, I'm giving you a hint now. Yes, all right, okay. So the poll is also there for all of you. Please make sure that you do send it out. Yes, very good, very good. Ribosomes, okay. So we're talking about semi-autonomous. That means that this particular organelle will have some amount of DNA or it will have some genetic material in it, right? So what is this right here? It will not be ribosomes, but rather this will be mitochondria, right? So this right here is going to be mitochondria. Now you have 2, 3 and 4, okay? So I'm going to go to the other screen in the meanwhile while you vote, okay? Is the poll visible to all of you? Yes, all right everyone. Okay, okay, all right. Answer is B. Yes, very good, very good. So we can close the poll now. Very good everyone, very good. So one right here is mitochondria, which is a semi-autonomous cell organelle that we do not find in red blood cells, okay? While when you look at 2, we're saying that this is an organelle that we find in cytoplasm and in endoplasmic reticulum. Now we know that what is there in the endoplasmic reticulum, which we find both in endoplasmic reticulum and cytoplasm, is nothing but your ribosomes, right? So we find ribosomes in cytoplasm and in the cytoplasm and in the endoplasmic reticulum. So we have RER, no? That is what is important. What is mature and mammalian? Mammalian is in mammals, right? Mature are the, what do you say, adult RBC cells that are there. Yes? I'm explaining, Pooja, I'm explaining, okay? Now on the other hand, right, if you see, we have dash which is involved in the formation of lysosomes. Now we know that lysosomes are nothing but the suicide bags that are there, which are formed from Golgi apparatus, right? So we see that from Golgi apparatus, we see that lysosomes are formed. And last but not the least, we see that dash is capable of digesting any organism that enters into the cell. Answer is already there in the previous one, which is lysosome. So your combination of options are mitochondria, ribosome, Golgi and lysosome, which is why the correct option here is option B. Yes, are we clear? What is mitochondria? Mitochondria is the powerhouse of the cell, right? That is what we know as mitochondria, responsible for producing energy in the form of ATP. I know this is a very interesting one. Now I have a very easy question, all of you. Select the mismatched pair. We have 4 options from which we need to identify which is mismatched, right?
A is potable water, which is nothing but water that is free from impurities. Global warming, the unnatural increase in temperature of Earth's surface. Oil spills being accidental discharge of petroleum from oil tankers. Eutrophication, which is nothing but the phenomenon in which non-biodegradable pollutants get accumulated in tissues. Yes, everyone, very quickly. I know, almost 3 hours and you guys are going strong. I'm so proud of all of you. So proud. You have no idea. Okay? Yes, all right, everybody. Very good. Very good. Okay, I can see that the poll is there and you are giving me the answers. It's a very easy one, right? Very easy one. So let's quickly wind up the poll. Yes? All right. So we'll wind up the poll now. Okay, very good, very good. Most of you have voted for the correct answer, which is option D. Thank you so much, Harish. This is the mismatched pair. Because you know eutrophication is nothing but the accumulation of excess nutrients, right? Which are nothing but runoff from the fields that are there, yes? So when we use a lot of fertilizers and we use a lot of nutrients and we add it to the soil, and when it gets washed off, right, it will then go and it will deposit in the water. It is not because of non-biodegradable pollutants getting accumulated in tissues of organisms, but rather in water bodies, right, which will ultimately harm them. Very good. You can use elimination method. If you don't know what is eutrophication, also just quickly go through the options. It will become very, very easy. Nothing to worry. Moving on to the next one. Very quickly. Yes? In the meanwhile, Mumtaz, I'll explain the previous question. For all of you, the next question is on screen, right? So please make sure that you read this. This is a very interesting question. So you have a match the following question, but this is not a 2-column match. It is a 3-column match. So you have to match from column 1, column 2 and column 3. And once if you do this, you will have to then cross check, right? You will have to match it with the correct option, right? So all of you in the meanwhile who are still here, please solve this question. Mumtaz, for the previous question, potable water is nothing but the water that we can drink, right? So it is the usable water. Now on the other hand, we also had another option which was there, which is nothing but we had global warming, which is nothing but the unnatural increase in the overall temperature. So that is also a correct match, right? Then we also had a third one. I'm going to quickly look at it. Oil spills, right? So oil spills that are there is when you have oil which is spilled in the oceans and that will block it. So it's an oil discharge that is there, no? And last but not the least, you had eutrophication, which said that it is accumulation of substances in the body. No, eutrophication is accumulation of nutrients in water body, okay? So you need to understand that. Yes, all right, everybody, all right. So I think the poll is not here. Harish, if you can send the poll, you can send it right away or it's completely fine. Please read it out loud. I'll solve it with you, Prarthana, once again, okay? Poll is also on the screen. Now you can solve, you can give me the answers in the meanwhile. Now, I have it on another screen as well, but I'm going to quickly solve it here itself. Yes, so the first one is mouth, right? And in the mouth, this is something that is from your 7th grade, yes? So from in your mouth, we know that we have salivary amylase, which is produced in the saliva or which we find in the saliva, right? And we know that this is responsible for converting starch into sugar, yes? So the correct math, so we have this. Now next is stomach, right? Now in the stomach, you know that gastric juice is produced, which consists of pepsin, right? And we know that pepsin is responsible for breaking down proteins into peptones. Now next up, you have liver, right? And in liver, we know that bile juice or liver produces your bile juice, yes? And we know that this is responsible for converting fats into smaller molecules, right? And we call this process as emulsification, yes? So it's responsible for converting large droplets of fat into smaller droplets. And last but not the least, we have pancreas, wherein we know that the lipase enzyme is produced, yes? And we know that lipase is what acts on these emulsified fats, converting it into fatty acids and glycerol. So this right here is going to be your correct match, right? And let's quickly close the poll, Harish.
Yes, are we clear now? All my brilliant students, are we clear? Yes? Very good, very good. We are still going strong. That's amazing. Yes, wonderful, wonderful. Okay. All right. So with this, if you see the correct answer, like how all of you have told me, is option A. Yes? Mumtaj, I think you are, I hope that I did clarify your doubt for the previous question, right? So I hope now it is clear. Yes? Okay. Are we clear so far? Any doubts in this question that you have? Any students who have doubts? Are we clear? Very quickly, let me know. I knew only 2. Oh, that's awesome, but still you were able to mark it. No, no doubts. Very good. We are all clear. See, now you know, no, at the end of the day, when we look at Olympiad, this becomes very easy, right? I have at least around few more questions. I think I'm not very sure of how much I have. Yeah, right? So I think I have around 5-6 more questions. Salivary amylase is nothing but an enzyme. Okay, it's a chemical substance that we find inside the saliva. Right? And we see that this salivary amylase is responsible for converting starch into simpler sugars. Right? So it's responsible for converting it into simpler sugars. Yes. Are we clear? Yes, Mumtaj, I've already explained this. Please make sure that you are focusing, okay? With P only we will know it's option A. I know, right? So if you use elimination method also, you will be able to get this. Yes? No problem, no problem. It's okay, Pratna. You can come back and watch it, okay? Right. Now let's move on to the next one. You can do Tukka for this because I understand it might not be easy for you. You need to select the correct match from this, okay? So you have mohair, which is matched to Angora rabbit, merino, which is matched to vicuna. You have, in the case of Angora wool, that's matched to Angora goat. And last but not the least, cashmere, which is matched to Kashmiri goat. So what do you think is the correct answer here? Yes? All right, everyone, this is a very easy one, but I do understand that this can be little tricky. Yes, okay. Ma'am, bile juice is used for digestion. See, bile juice is not directly involved in digestion, okay? So, bile juice is produced by the liver, which will act on large droplets of fat, okay? So, it will act on the large droplets of fat and make it into smaller droplets so that enzymes can act on it. So, its job is just to break down large droplets into smaller droplets, which we call as emulsified fats, okay? Yes, all right. Very good, very good. Yes, very good. So more or less, let's wind the poll now. Let's close the poll, okay? Very good, Rachit, very good. So in this case, we see that the correct answer is option 4. That is cashmere goat, cashmere which is matched with Kashmiri goat or cashmere goat, okay? So this is basically, if you know your fiber to fabric, right? This should become a very easy one, okay? So mohair is nothing but a kind of yarn or fabric that you get, but not from Angora rabbit, but you will get this from a Angora goat, okay? Merino is again a type of wool that you get, alright? So this again is a type of wool which you get from merino sheep, right? Because you know sheep is what gives you wool. Now vicuna is also another animal, but you get vicuna wool from them, okay? And Angora wool is what you get from Angora rabbit. So you can make a note of this as well. And finally, you know that the correct match is nothing but option 4. Yes, all right. Yes, everybody, I'll wind it up very soon. I'm just having a look at how many questions. I've just written the number. I think about 3-4 more questions are there only. Will we get session PDF? Of course, you will get session PDF. I will send it to you. But maybe you might only get it tomorrow. Okay, you may not get it tonight. You'll get it tomorrow. Yes. All right, everybody. So I have another 10 more slides. Okay, just 10 more slides and we'll be done. Now refer to the given table and select the correct option. So this is little bit on your grade 7 concept. Okay, this is on your grade 7 concept on seed dispersal. Yes. So quickly think back to seed dispersal and see, you don't even need to know anything too fancy. If you're able to remember basics of seed dispersal, answer becomes easy.
So you have mode of seed dispersal by plants and you have example here. So you have wind and you have A and you have some missing ones also, A, B, C and D, right? So from this you need to select which is the correct option, right? Yes, all right everyone, very quickly, very quickly. Are you all getting this? Ma'am, did Saurabh sir go home? Oh wait, I have to check my messages, I have not checked. Okay, yes, Saurabh sir went home. It's okay. Yes, all right, very good. Okay. Aren't you feeling sleepy? No, I'm not feeling sleepy. I think here and there I am drifting off, but I'm not sleepy. Saurabh sir has left home for now, right? He has to go back home, no? He also stays very far from here, so he's gone home. No, I got it. Oh, amazing. All right, everybody, so let's quickly wind up the poll for this, right? So here if you see, no, this is very simple, okay? I'm going to solve it here only. I have an extra slide, but I'm just going to do it here. See, in this case, no, if you see, you have acer and of course you have urena that is there, right? And you also have hiptage, yes? So acer and hiptage are examples of plants which are dispersed or their seeds are dispersed by wind. While when you look at xanthium, acer and berries, we see that these are all dispersed by animals. Yes? Now with this simple understanding of the concept, right? I want you to check this. A could be urena whereas D could be acer. A is wind. Can it be urena? No, right? Oops, this should be urena, sorry. Can this be urena? No, right? Because it is again dispersed by animals, right? So this is incorrect. C could be insects while D could be xanthium. Explosion, xanthium does not disperse its seeds by explosion. So again it is not C. A could be castor, D could be hiptage. Again, explosion is not seen in hiptage, which is why we see that the correct answer here is option B, wherein berries are pollinated or their seeds are dispersed, by animals, right? And coconuts are dispersed or their seeds are dispersed by water, right? What about xanthium? Are we clear about this? Yes? Ma'am, I'm usually sleepy. I know, you guys are all very active. I'm very surprised. I know it's already 10, 12, so quickly, let's go to the next one, okay? Yes, we are reaching towards the end, okay? I think we have only 3 more questions. We are more or less done. Or 2 more, I think. Right? Okay. Last set of questions, everybody. Last maybe 3 to 2 questions. I am not sure, but we are reaching the end. I know that. So this is again with respect to soil percolation rate, okay? So this is with respect to soil percolation rate. Now in this case, if you see, right, we see here that in this case, we see that Shalini conducted an experiment, alright, and what happened was that in this particular experiment, she took 3 soil samples L, M and N, okay. Now identify soils L, M and N and then figure out which among them is incorrect. Option A says that soil M is abundantly found in those areas where plants with thick, fleshy and photosynthetic stems are present. Soil N is present abundantly in those areas where plants with aerial breathing roots are present. L is suited for growth of wheat and maize. N is best suited for growth of pulses and M is suited for growing of rice. Little bit tricky, right? Okay, I can see the answers coming in. I'm also going to vote. Yes, very good. It's buffering. Okay, all right. Very good, everyone. Very good. When is Quizmaster? Quizmasters are coming very, very soon, right? We just launched it. It will be coming very soon on the channel. Be excited for it, right? Yes, wonderful, everyone. Wonderful. Okay. See, now in this case, right, you have the percolation rate. Now, your 3 types of soil includes what all? You have sandy soil, right? You have loamy soil and you have clayey soil.
Now we also had a particular video. We had a small experiment shot as well on the channel, no, on sandy, loamy and clay soil and their percolation rates. How many of you have checked this out? Yes, all right. So in case if you have not checked it out, do check it out, okay? Now sandy soil will have the highest percolation rate, which means that it cannot hold water, which means that the one with the highest percolation rate here, that is M, which is 25 ml per minute, is nothing but your sandy soil. Now on the other hand, clay soil will have minimum percolation rate and can hold a lot of water, right? Which means N right here is your clayey soil, which means you are left with option L, that is 10 ml, which is your loamy soil. Now keeping this in mind, if you have a look at the options, right? So I'm just going to quickly write it on the screen as well so that it makes me easy to solve. So you have sandy is M, 10 here is, this is L, and this is N. Now soil M is abundantly found in areas with thick fleshy photosynthetic stems, right? So in this case, if you see, we know that M right here, of course we find them in areas like that, right? But most importantly, if we go focusing closer in detail, right, we see that N is best suited for growth of pulses, right, while M is more suited for growth of rice. So now the correct answer is option number D. Are we clear? Yes? Are we clear with this? It's a very simple one. I know, Harsimran, it will not be a short, but now it's become a video. That's why. Yes, okay. Second last question. I know this is the second last question. Okay, guys, very quickly, we're going to wind up in 5 minutes. You have a diagram given to us. Okay, we have P, Q, R and S. Identify P, Q, R and S and figure out which is the correct statement regarding them, right? Second last question. Yes, everyone. Quickly on your screens. We can have the poll running for this as well. It's the second last one. I'm 100% sure. We have only one last question with respect to reproductive system and we can wind it up, okay? All right, very good. So you need to identify what is P, Q, R and S and then identify and select which is the correct statement. And guys, in the meanwhile, don't forget to hit that like button, no? I hope all of you have liked the video. All of you have told your friends to subscribe to this channel as well, right? So do not forget. And let me tell you, we are all very proud of you. Being 6th to 8th, and I know competing with 9th and 10th is a little tough, but you guys are so, so energetic, so enthusiastic, and you're still there. We've consistently had about 30, 40, 50, 60 live watching throughout today's class. So I must tell you, I'll take a minute and I will really appreciate how amazing and wonderful all of you are, right? Truly amazing, and I'm very proud of all of you. Yes? All right, okay. Yes, I can see some answers. I can see how all of you are trying to do this now. You're trying to identify R, which is very good, right? Which is penicillin. R is penicillin and it is identified correctly. Q is chlamydomonas. Now I know P and S is something you guys will be like, what is this? P, definitely you have no idea what it is, okay? S, maybe some of you might be able to figure this out. Now S right here is trypanosoma. Now for those of you who don't know what is trypanosoma, no, trypanosoma is a kind of protozoan which actually causes a disease known as trypanosomaniasis. Okay, it's also known as sleeping sickness. You can go read about it. Okay, so it causes trypanosomaniasis, right? Now A here is called as Giardia. Okay, and this right here is a type of protozoan that is there. So now in this case, we see here that these two are protozoans. This right here is an algae. This right here is a fungi. Now based on this, right, we're saying cell wall is present in P while it is absent in Q, R and S. Now protozoans are organisms which do not have cell wall. So this right here is incorrect. No? B says that R is a eukaryotic organism, whereas P, Q and S are prokaryotic. R is eukaryotic organism? Yes. Penicillin is eukaryotic. But P, Q and S are prokaryotic? That's not the case. So this is incorrect.
Now, P and R are considered to be connecting link between living and non-living. No, there are no examples of viruses here, right? Which is why this is not the correct answer. Which is why in this case, we see that the correct answer is option C, right? Wherein Q is photosynthetic. That means your Chlamydomonas is photosynthetic, right? While S is parasitic in nature. S, trypanosoma, is parasitic. I told you it causes a disease known as trypanosomaniasis, okay? Very simple and easy. Yes, thank you so much. I can see a lot of you voted for B, but the correct answer is C, okay? Now let's move on to the last final question for the day. Yes, we have reached the last and final question, right? No, we will not be taking more time. Yes, I know we completed more than 3 hours and I am so proud of all of you. I cannot tell you how proud I am. This is little tricky, okay, but you take your time. I will write on top of these letters in case if you are not able to see, okay? You have A, which is your female reproductive system, and you have P, Q, R and S, which is marked, okay? So I'm going to draw arrows as well so that you are able to see. Alright? Now here on the other hand, you have diagram B, which is given to you, wherein you have X, Y and Z, which is being marked. Now what you need to do is to figure out, so you've given A is your female reproductive system, B is development of fertilized egg. Now what you need to figure out is in the labeled parts of the female reproductive system, where will you find X, Y and Z, right? Where exactly are you going to find, right? Yes, all right, okay, I can see some conversation is happening. Somebody's, okay, I think it's Pooja's birthday, so happy birthday, right? But I want all of you to focus. This is the last question, Lubna. Last full and final question for the day. Yes? Ma'am, this you explained, we don't know. Yes, I know for a lot of you, maybe reproduction chapter has not started in school, no? Or has it started? Can you tell me? Has reproduction in animals started for all of you? Not understanding this question, no problem. If you don't understand this question, take a guess. Just take a guess. No, see, it will start soon. Ha, that's why. Oh, in some cases, it's already finished. Okay. How sweet. Okay, sorry ma'am. No problem, no problem. I'll explain this. Very simple. Happy birthday, Arish. Happy birthday. Yes, it's the next chapter. Okay, very simple and easy. So I'll explain this a little, okay, because I understand that you guys don't know how to solve it. So I'll explain this question for you. So this right here is your female reproductive system. It will look something like this, but the parts we need to be associated are just the ones which are marked, okay? So I'm just drawing that. Now X right here is nothing but your egg, okay, which is your female gametes that is produced inside the, so this right here is produced inside the ovary. Now when it is produced inside the ovary, it will be released, right? So it will be released into these parts. So this right here is the initial part of the oviduct, or what we call as the fimbriate, right? So these finger-like projections are known as your fimbriate, the early part where the egg will be released into. Now here we are saying that once the egg is released, right? So from S, it will then go ahead, okay? So from here it will go to the next part, which is the fallopian tube, right? Or what we also call as oviduct. Now here we see that fusion of male and female gamete will take place. So inside here we see that fusion of male and female gamete will take place, resulting in the form of zygote. So in S, oops, so where will we find X? Where will we find the egg amongst the marked part that is there? Let me just write that again. Right. So if you look at X, right, we find X here in S, okay, so that we have identified. Now next we see that fusion takes place inside Q, or it is taking place in Q. But what happens is that it will go further, right? We see that it will become two cells. Sorry, it will not take place in Q, but Y that is there will be in Q, where the single-celled zygote will now undergo division. So one cell will now, so zygote is how we all start our life. We all start our life as a single cell, no? So this single cell will further divide and divide and divide. So this two-cell stage, the next one that you observe,
So egg and sperm will fuse. It will give you zygote. Zygote will now form a two-celled structure which we will find in Q. So Y right here is in Q. And we see that eventually it will form a group of cells or a bundle of cells, right? And this right here is something that we will find in P, which will move closer towards the uterus. Right, so here if you see Z that is there is your morula, which you will find in P, which is why SQP is your combination, and the correct answer is option B. So we can wind the poll up now, Harish, we can wind it up, yes? All right, okay. So we can close the polls. Are we clear with this? Are we clear? Yes? All right, so I know this question is a little tough, so when I teach reproduction as well, I am quickly going to do this question once again. If you've not understood, don't worry, okay? So with this, of course, I'm winding up today's class, right? And this was part of our marathon class on Science Olympiad where we solved the latest 2021 paper set B, yes? And when we say we've got you covered, we've really got you covered. No, we are there for you all throughout, and none of this is possible without you. Yes? So everybody, I will be sharing this with you on Telegram. You will be getting the session PDF tomorrow. Yes, so tomorrow by evening you will be getting it. And we've had this class for 3 hours and 30 minutes. And see, it's all your grit, okay? Of course, we are here for you at all times, but it's not possible only with us. No, it's also because of all of you. So thank you so much for being such amazing students. And yes, we hit 190 likes. But what you can also do is share this video with your friends. Tell them that subscribe to BYJU'S 9th and 10th grade channel, because this is where all the magic happens. Yes? So everybody, thank you so much. Go home, go sleep and wake up with a lot of freshness tomorrow. I hope you have a wonderful day. Thank you so much, everybody. Hoping to see you very, very soon again. Bye-bye. Have a nice day and good night.